हेलो 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 हेलो। लास्ट टाइम यहाँ पे ख़त्म किए थे अपन, ठीक है। ये फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते भाई। वो भोसड़ी वाले नहीं, नया क्वेस्ट दे दिए, ठीक है भाई। सेवेंटीन डेज आर्कॉन क्वेस्ट है ना। क्वेस्ट करने के पहले अपन ये आजू बाजू का सब माल मसाला कंप्लीट करते हैं। दो फोर्ट्रेस ट्रायल, हाँ चल चालू कर। यान पे क्या बिल्डर डैमेज 57 क्रिम्सन। टम्पी पो क्ली ओपी है रे भाई, क्ली क्ली चाहिए भाई मेरे को। क्ली होना। Nice. दोनों गए भाई, दोनों गए। Over.
हो गया कंप्लीट। अच्छा था। ओ यूंजिन ट्रायल का, ठीक है भाई। Observe and step. और मिस Observe मिस and leap. Observe and step. Observe व्हाट द फक। and leap. And step. मिस हो रहा भाई, इसका ये पहुंच रहा ही नहीं वहां तक। Observe. 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 And step. 132। Observe. And step. And step. And step. वाह And step. And leap. And step. And leap. इवेंट है तो गेम तर ह्याच्या पुढे आहे। हा तर इव्हेंट आहे। Steady as stone. As a delicately made woman. Leave it all to me. Time to clean up. हो गया।
You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes. अभी ना I'll teach you all right. Mark mine. थोड़ा सा कमीशन करते, ठीक है? थोड़ा सा कमीशन करते, फिर लगे आर्कॉन क्वेस्ट चालू कर देते, जग्गे पे चालू करते भाई। Visibility is excellent. If we head to higher ground, we can do a full recon of enemy activity in the area. A pleasure to be working with you. I want to help. हाँ क्या करेगी तू? हेल्प करेगी तू, टेंशन May मत ले। knowledge guide you. Gather! Stand clear. Animal test 6308. Crush. Solidify! Rain outlines your fate. Stand clear. Animal test 6308. Gather! ए क्या है रे? अरे Order guide you! Rain cutter. Stand clear. Animal test 6308. किधर है? Enhanced animal module 75. Yeah. Shudder. Yeah. Solidify! ब्रो पानी के कोने में बैठा था भाई, ठीक है भाई। रोहित कुमार, यप, आकाश चरण, मुताव एचपी सैंड्स और नो फ्लेक्स। अच्छा रिव्यू करूँ क्या आकाश तेरा अकाउंट? वेलकम टू द स्ट्रीम आकाश। रुक जा, कर रहा मैं भाई, माफ करो, चैट नहीं देखा ब्रो, माफ करो। रुक जा, किधर गया रे ये पैसा अकाउंट करते रिव्यू? माफ करो।
80 50 63 64 60 63 64 और 5. आई एम ऑल्सो हुताव में लॉल ब्रो. हुताव के लिए तो मेरे को पूल करना है भाई. ये है आकाश का अकाउंट, ठीक है. सबसे पहले मेरे को बात बता आकाश, ये जो तेरा आईडी ये फ्री टू प्ले है या फिर तूने खर्चा किया है इस पे? रोहित, आपका आईडी करना है रिव्यू? हाँ रोहित, आकाश है कि नहीं चैट में? गया क्या वो? कोई दिक्कत नहीं, अपन रिव्यू करेंगे फिर भी. योर ब्यूटी शॉक्ड मी, यू मस्ट बी इलेक्ट्रो. भाई ये तो इलेक्ट्रो वाला है. देख 1 है, 2 नहीं है, 3 है इसके पास, ठीक है. फ्री टू प्ले. रोहित कुमार बोल रहे हैं हम है पे टू प्ले. हो पाया है, तुमने खर्चा किया. रोहित कुमार तुम्हारा भी अकाउंट का यूआईडी भेज दो, तुम्हारा भी देख लेंगे खर्चा कितना किया कैसा है. सच बता रहा हूँ मैं, मेरा बस वैल्किन खरीदा हूँ. भाई वैल्किन खरीदा है फिर भी भाई अकाउंट फ्री टू प्ले कैसा हो गया भाई? आई स्टार्टेड ऑन सितंबर 1 2020. हाँ मैं भी 1 साल ही हुआ मेरे को भी खेल के भी. इतना नहीं. एडवेंचर रैंक 60 अच्छा ग्रांड किया भाई, माँ कसम. का अकाउंट देखते भाई. एट्रीब्यूट शोगन. भाई शोगन मेरे को चाहिए थी, शोगन के बैनर पे मेरा लक नहीं लगा, मैं नहीं ले पाया. ठीक है भाई. मैक्स डैमेज क्या जाता है इसका शोगन का तेरा आकाश? शोगन का मैक्स डैमेज क्या है? अल्ट पे एक्सपेक्टेड करता है 200 300 के में, ठीक है ना. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं. ओ भाई एनर्जी रिचार्ज तो भर भर के दिया है. इलेक्ट्रो डैमेज बोनस बस 46% है. वेपन में 700 के. सिग्नेचर वेपन दे के रखा है भाई, और तू बोल रहा है फ्री टू प्ले अकाउंट है. ठीक है भाई, ये कर लो तुम लोग. जी ये कर लो. मैं भी फर्स्ट डे से खेल रहा हूँ, पर मैं 3 मंथ्स के लिए बंद किया था, पर फिर से स्टार्ट कर दिया. लॉल. अरे भाई गेंशन अकाउंट बंद नहीं रखना भाई कभी भी. चाहिए तो एक आध बार आके कमीशन कर लो, गेंशन अकाउंट बंद नहीं रखना भाई. मेरे दोस्त का भाई 2 महीना बंद था, हैक हो गया उसका अकाउंट. ये देखिए क्या है भाई. मेन रेडन पर भाई आर्टिफैक्ट तो है भाई, ठीक है. आर्टिफैक्ट तो है. क्रिट रेट डैप ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं. वैसे मेरी गांड जलती है ना, ये देख क्रिट डैमेज देख. मेरी गांड जलती है ना भाई, मेरे को क्यों नहीं मिलते भाई? मेरे को क्यों नहीं मिलते ऐसा आर्टिफैक्ट? मेरी यूला वैसे फालतू आर्टिफैक्ट पे मेरी यूला भाई 500 के का डैमेज कर रही है भाई. 28 ये देख. इक्वली बैलेंस्ड है भाई ये तो बहनचोद. ठीक है भाई. जरा तेरे ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट भेज तो आकाश. चरण भाई तेरे ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट भेज. वेलकम में कितना ट्रांजैक्शन किए हैं, ठीक है. टा, 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 टा. ये हटाना भूल गया क्या तू? हाँ.
फ्री टू प्ले बोल रहा है। हो भाई यही बोले भाई। Silly churl, Billy churl, silly Billy, तो hilly ये churl. हटाना भूल गया भाई। Woo. आई हैव ओनली 3 कॉन्स्टलेशन। भाई मुश्किल से किसी फ्री टू प्ले प्लेयर के पास उसके मेन कैरेक्टर का एक कॉन्स्टलेशन मिल जाए भाई। रेशियो तो है ये रेशियो तो भाई क्रैक है भाई। अभी तू पे करेगा तो इतना रेशियो मिलेगा ये भाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Toodaloo. सिग्नेचर वेपन स्टाफ ऑफ ओमा, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था R3 R4 भाई। 1 ऑन गानी 1 2 ऑन रेड। समझ रहा मैं, तेरा फ्री टू प्ले अकाउंट नहीं है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा R2 या R3 भाई। स्टाफ ऑफ ओमा शिमिनावा। चौदह, ठीक है भाई। 80 के परसेंटेज है, 9% चलेगा भाई। इसको 80 के बिल्ड करा है तूने। इसका डैमेज क्या आता होता होगा? होता होगा डैमेज क्या जाता है? I got new science today, but don't know. I have artifacts to update it. Don't have artifacts to update. Silly churl, Billy churl, silly Billy, Bro. hilly churl. Woo. 100 के चा माफ करो भाई, माफ करो, माफ कर दो, कोई चांस छोड़ दो भाई मेरे। नो बॉफ 100 के चार्ज पे जा रहा है, ठीक है। 200 चाहिए, अच्छा रेशियो है भाई। मैं कितना लोगों को बोलता हूँ भाई ये रेशियो मेंटेन करो, डैमेज 200 तक लेके जाओ, रेट 40 रहेगा तो भी चलेगा भाई। जिनके पास गानियों है तो मतलब लिटरली वो लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है भाई, कोई नहीं सुनता भाई। इसका चार्ज अट्रैक्टिव है जो 25,000 जाता रहेगा वाइप डैमेज। अच्छा, इसका चार्ज अट्रैक्टिव 25,000 जाता रहेगा भाई, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है भाई। क्या ही बोलूं, क्रायो 46 कोई दिक्कत नहीं। सिग्नेचर वेपन और बोले हम फ्री टू प्ले है। नीमा 505 वेलकम टू द स्ट्रीम प्लीज। यार 33 लगता है, ठीक है करते हैं। नीमा रुक जा, इसका होने दे रिव्यू, फिर तेरा रिव्यू करते हैं भाई, ठीक है। तेरा भी रिव्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये अकाउंट गांधी मेल्ट चार्ज 80 के 130 के प्लस। हाँ दो, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेल्ट और चार्ज पे भाई। जा घूमते मत रहे, रेशियो मेंटेन है फ्लावर में। डिफेंस की जगह 80 के आ जाता वहां पे भाई, ठीक है। क्रायो डैमेज बोनस भी 2.7%। ये किस में, एनर्जी में गया है क्या ये आर्टिफैक्ट एचपी में गया है। नाइस वन रही है, ये रेशियो है भाई ब्रो। देखिए
ये है मेरा हुताओ का 94K जाता है वेब। हाँ ये है। नीदा वेलकम टू द स्ट्रीम प्लीज। करेंगे भाई, रिव्यू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे भाई। पहले ये अकाउंट होने दो भाई, फिर अपन बाकी का ले लेंगे। रोहित कुमार, ठीक है भाई, रोहित तेरा भी करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर है नीमा का, थर्ड नंबर है नीता का, फोर्थ नंबर है रोहित का। ठीक है, याद दिलाओ बस। चोंगली एचपी बिल्ड कर देता भाई। Osmanthus wine tastes the same as I मेरा remember. 3900 है। आई But गॉट where are हर्स इवन those इन who 6 pools। share the memory? आकाश रहने दे भाई। आकाश मान लिया भाई, तू बोल रहा वो सच है भाई। ठीक है, तू बोल रहा वो सच है। 64 130 एनर्जी रिचार्ज 134। ठीक है, जियो डैमेज बोनस 75। एचपी बिल्ड है क्या ये? हाँ, मैं इसको सिग्नेचर वेपन ये कर रहा था भाई, एक्सपेक्ट कर रहा था। निमा कर रहे, निमा निमा रुक जाना, निमा 2 मिनट, इसके बाद तेरा ही अकाउंट है भाई। चेक माय कैरेक्टर्स आफ्टर गान्यू। हाँ वही देख रहा ना, आफ्टर गान्यू देख रहा। मिलिलिथ रहने दो भाई, फ्लावर की तो बात ही नहीं है। ठीक है भाई, क्रिट रेट क्रिट डैमेज दोनों है एक फ्लावर में। यार 60 से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपन। क्रिट डैमेज 28% दे रखे भाई, जियो डैमेज बोनस में भाई क्या बोलेगा। ओके ओके, मेरा झोंगली बिल्ड तेरे को दिखाएगा बाद में आकाश। खाली एचपी बिल्ड किया भाई मैंने, इसमें कॉन्स्टिलेशंस नहीं है भाई। काजुआ 20,000। काजुआ का मेरे को पता नहीं भाई बिल्ड कैसे कौन सा होता है, क्योंकि मेरे पास है नहीं कैरेक्टर वो। आई यूज ओनली विथ ईतो। जियो टीम है क्या तेरी? यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरे को काजुआ का पता नहीं भाई, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कैरेक्टर वो। काजुआ है ही नहीं तो कैसा पता चलेगा ब्रो। 15% एनिमो डैमेज। ठीक है भाई, ओ भाई 12 सेकेंड्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 30% बफ। ठीक है भाई, काजुआ बनता है फुल ईएम ब्रो। ओ एलिमेंट्री मास्टरी। ठीक है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। आर्ट इफेक्ट में ना, मतलब हाथ ही नहीं पकड़ने का ये पे टू विन वाले अकाउंट्स का भाई, पे टू पी वालों का भाई। आर्ट इफेक्ट्स देख रहे हो, आर्ट इफेक्ट्स देख रहे हो, क्या चाहिए और हेंचो। काजुआ में एक्सपेक्ट कर रहा था C2 C3 भाई। रीड हिज टैलेंट। हाँ मैं पढ़ा, वो टैलेंट पढ़ा मैंने। इसका काजुआ का टैलेंट क्या? काजुआ का टैलेंट पढ़ना है? किसका पढ़ना है? 4 अकाउंट है अभी लाइन में, रुक जा। एट्रीब्यूट्स नाइडा। अबे नाइडा का सेट क्या है रे आकाश? नाइडा का सेट क्या है? 770 to 24। मेरे को नाइडा का सेट नहीं पता अभी तक भाई। 100 डैमेज बोनस, सैक्रिफिशियल एलिमेंटल है। यस, काजुआ's टैलेंट। नाइडा का सेट बता तो जरा क्या है।
ठीक है भाई। आर्ट इफेक्ट में देखना ही नहीं है भाई। आर्ट इफेक्ट में लेवल AR60 लोग का हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। डीप कूल, ओ भाई। नाइडा के लिए भी सेव नहीं किया क्या? और कॉन्स्टलेशन टैलेंट 666, ठीक है भाई। नाइडा बेच आया का भाई, आया का बिल्ड देखने को 285 हाई क्रिट डैमेज, 285 क्रिट डैमेज, ठीक है। 111 61 वेपन में क्या देखे रखा है? "30 seconds. This effect will maximize for 3 stacks and the duration each stack depend on the others." ठीक है, ठीक है। She scales of EM, ओके भाई। उसका डोमेन देखा, डोमेन एक्सपांशन नाइडा का भाई जो इतना बड़ा डोमेन है ना उसका, सब बाप नहीं रुक सकता वो डोमेन के बाहर में। सब आ जाएंगे भाई, सब आ जाएंगे उस डोमेन में। ये क्या आर्टिफैक्ट है यार, ये क्या आर्टिफैक्ट है ब्रो। ऐसे आर्टिफैक्ट कौन से AR से मिलना चालू होते? क्योंकि मेरा कहना है सेम आया का इज बेटर। वो अपन देखेंगे भाई, वो अपन देखेंगे भाई। चैट में झगड़ा नहीं दे अपने को। टेन 10 4 10 ओ भाई। आया का तो बिल्ड है भाई, जो चोकोमी। I am free to play as I said, ठीक है। विश्वास कर लिया मैंने, तेरा अकाउंट ये फ्री टू प्ले है। चैट मेरे को बताओ इसका अकाउंट फ्री टू प्ले है क्या? ठीक है, फ्री टू प्ले है क्या इसका? नाइस वन, लवली लवली ब्रो। जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई चैनल। मोटिवेशन मिलता है भाई कि भाई है कोई तो। हाइड्रो डैमेज मस्त। अपन गेंशन खेलते हैं? नहीं खेलते, ऐसा नहीं खेलते गेंशन। हाँ भाई, 88 माइनस। आकाश उसको प्लस में लेके आना, देखते क्या कर सकता है क्रिट रेट को प्लस लाने के लिए। ना वेलकन वाला है ब्रो, तो वेलकन लिया मतलब पैसा नहीं भरा के गेम में। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, इज्जत दिखाओ जरा। हीलिंग बोनस भाई, ये तो हीलर है भाई। वैसे उसको क्रिट रेट का क्या ही जरूरत है, बहन चोद हीलर तो है। 8 7 अनएक्सपेक्टेड चाहिए। कैन आई गेट इट +6? और वैसे भी कोको में HP डिपेंड करती है भाई। हाँ वो तो है। ओवरऑल इसका अकाउंट ये बोल रहा है फ्री टू प्ले है, उसको पता भाई फ्री टू प्ले है कि नहीं है। ठीक है, अपन मान के चलते फ्री टू प्ले। नाइस बिल्ड, अच्छा बिल्ड देखा मैंने। AR60 है, अच्छा ग्राइंड किया भाई तो, ठीक है। नाउ अभी जाते दूसरा अकाउंट पे। दूसरा अकाउंट किसका था रे?
मुझे चैट में किधर गई? नीमा 8190 171 61 What? What? Bro, Nima. Thank you for subscribing, Akash. Thank you for subscribing. Nima, I'm sorry, but I can't pronounce your name. I'm really sorry. ट्रस्ट करो भाई. कर दिया ना, मैं बोला तो सही. फ्री टू प्ले अकाउंट है तेरा आकाश. क्या बोलूं मैं? 57 यार. ओके, नो प्रॉब्लम. निमा, इज दिस अकाउंट फ्री टू प्ले और हैव यू पेड फॉर दिस? सबसे पहले क्वेश्चन मेरा वो रहेगा भाई, फ्री टू प्ले है या नहीं है? ओके. I would have gotten so much weapons if I had Falcon. Yai Miko, please 3-3. Oh pie. Oh pie. What the fuck? 4-star. ओके ओके, आप फ्री टू प्ले. ओके, मुंह पे सिर्फ 8 5-स्टार वेपन है बस, और अभी 2 निकलेंगे मेरे पे, मुझ पे. फिर सिर्फ 8 5-स्टार वेपन से. अच्छा 8 है, ठीक है भाई. मिको, व्हाट इज दिस बिहेवियर मिको? ब्रो, आर्ट इफेक्ट देख रहा है इसके? रहने दो भाई, 14% है. रहने दो भाई, ठीक है भाई. ब्रो, मतलब कैसे मिलते हैं यार ये आर्टिफैक्ट यार? हाउ हाउ यू गेट ऑल दिस फकिंग आर्टिफैक्ट्स? ब्रो, मेरे को नहीं समझा अभी तक मैं. बोनट 26 Benny's adventure team 250. assemble! नाइस वन. स्काईवार्ड ब्लेड, ठीक है. एनर्जी रिचार्ज, नोब्लेस 4 सेट नोब्लेस का दिया है. इसमें क्या है? ई एम ही रहे, ई आर रहेगा भाई. ई एम है क्या? ई आर और ई एम दोनों है. ओके, हीलिंग बोनस. ओके ओके, ठीक है ठीक है भाई. 10 एक्सपेक्टेड है भाई. आई एम स्टिल फार्मिंग द आर्टिफैक्ट्स. ओ प्रो, व्हाट यू नीड? You have this much fucking beautiful artifacts. मेरे पास तो 5-स्टार वेपन है, बट ओनली गुड वंस. वाह, ठीक है भाई. देखेंगे ना अपन तेरे पास क्या क्या वेपन है, वो भी देखेंगे ब्रो. आई वांट अ एनर्जी रिचार्ज स्वॉर्ड फॉर बेनी 5-स्टार वन. वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी आकाश तेरी भाई. वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी ब्रो, कोई दिक्कत नहीं. फ्री टू प्ले, ये देखो, ये होता है फ्री टू प्ले भाई. ये यार, ठीक है भाई. मतलब एक ना एक पीस पे ईएम है तो ईआर तो है ही है. C1 है भाई, ठीक है. नाहिदा
Yes. So close to 1000 yen on this Kazuha. Yes. हम तो अकेले ये क्या एक्यूविला यूज करते हैं। वो क्या होता भाई? वेपन है क्या? 65। ओ भाई, किताब को इसके हाइट की है भाई। एलिमेंटल रिएक्शन ग्रांट 16% ऑफ एलिमेंटल डैमेज बोनस फॉर 10 सेकंड्स, मैक्स 2 स्टैक्स। ठीक है। 4 से डीप पूल। आर्टिफैक्ट तो है भाई। ये देख इक्वल रेशियो भाई, और 10 चाहिए था डैमेज, ठीक है ना? तो वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाता था आर्टिफैक्ट। एक्यूला शॉट, अच्छा ऐसा बोलना भाई। वो स्पेलिंग मिस्टेक देख, उसका स्पेलिंग देख। यू गेट इट फ्रॉम स्टैंडर्ड मैनर ब्रो। और 10% चाहिए था क्रिट डैमेज ब्रो। कंप्लीटली बैलेंस हो जाता ना वो पीस, इतना सेक्सी लगता भाई। इधर इधर गया उसका ये डैमेज 27। ठीक है भाई, इतना डैमेज कहाँ से लाते हो यार? 496। ठीक है, आया का देखने दो भाई। A blade 218। embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Why Nima? Only 280? Why it's only 218? R5 expected. Let me see the set. 36. Okay. 36. Okay. 19. 10. ठीक है भाई। लकी पीस है ये। नो लॉस्ट ऑन ईतो वेपन बैंड। रोहित कोई दिक्कत नहीं रोहित, होते रहता है वैसा, होते रहता है। आया का C1 है भाई। 10 एक्सपेक्ट और क्या कर सकते हैं? 10 चीची 1, 2, breathe. चूची है 3, बे, चूची। 4, and 11 हीलिंग बोनस 67, एनर्जी रिचार्ज 127 1। ईशान इसको दिया है क्या? नाइस मेडन्स लवर हीलिंग इफेक्टिवनेस। हीलर है भाई, और क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे? C1 ये है फ्री टू प्ले अकाउंट भाई। वो मैं भी मानता हूँ चीची भाई, तुम लोग हंस रहे हो, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जिंगचू ओके 215। टेंग्रीफिंशल 80 के वाला एलिमेंटल बस्ट
नोब्लेस क्या आर्टिफैक्ट है यार, मेरे को कब मिलेगा ऐसा आर्टिफैक्ट? When I will get this type of artifacts? कब? When? ये देख 22, 31. Bro. 88. Expected 10 था भाई वो. Wrong artifact sites. हाँ वो तो है. इसको ये देना था ना. मैंने कौन सा दिया था? नोब्लेस और ये सब दिया. सर ग्राइंड करो डोमेन. मैंने घिसना पड़ता है. करेंगे भाई ग्राइंड भाई, रुक जाओ भाई, करेंगे सब करेंगे. 89. ग्राइंड के बाद में इतना चूतिया चूतिया आर्टिफैक्ट आता है ना भाई. आई नो. लग जाए भाई, मेरे ग्राइंड के बाद भी इतने चूते चूते आर्टिफैक्ट आते हैं ना भाई, क्या ही बोलूं. शुड यूज 4 सेट और 2 पीस हाइड्रो. हाँ मैं भी वही बोल रहा था भाई, वही बोल रहा था मैं, लेकिन उसका कुछ बिल्ड रहेगा अलग, तो वो देखे भाई. ठीक है ना. उसका कुछ अलग बिल्ड रहेगा तो उसके लिए वो कैरेक्टर. दैट्स व्हाई आई एम स्टिल फार्मिंग आर्टिफैक्ट्स. ठीक है. शिमिना नोब्लेस, मेरे एक नोब्लेस देता है, वंडर आर देते हैं. भाई 4 स्टार भी कितने प्यारे बिल्ड किए भाई, 4 स्टार भी कितने प्यारे बिल्ड है इसके भाई. नीमा थैंक यू फॉर गिविंग योर अकाउंट फॉर अ रिव्यू. ग्राइंड करो भाई, 57 ईआर हो, कैन ग्राइंड मोर. 4 स्टार एकदम ओवर पावर बन जाएगी रे. आई एम फार्मिंग डोमेन अगेन फॉर योर. चलो ठीक है भाई आकाश, कर ले भाई, तू फार्म ही कर ले भाई, तू जिंदगी मौत कर दे भाई. अभी और एक अकाउंट था ना रिव्यू का, क्या नाम था उसका? दूसरा देखने को किधर गए रे वो अकाउंट? नीता. यस 807. डबल 2 डबल 8 डबल 9. मेलन बर्गर. व्हाट द फक, 59 यार ब्रो, मतलब यस थैंक्स ग्रुप. Ayakan Naida please. Ayakan Naida. Okay bro, okay. Okay. What the fuck did I just do? Let's see Ayaka. जैसे ये बोल रहा भाई. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. सिग्नेचर वेपन दे के रखा है भाई. नीमा, this is the crit damage. This is crit damage of Ayaka. 150 more than, oh sorry, 250 more than 250 or 250. Thanks for the review. You're most welcome. तुम्हारा रिव्यू में 4 stars चलेगा आकाश, एनी टाइम. या थैंक्स ग्रुप. you're most welcome आकाश, most welcome bro. भाई सब्सक्राइब करना ना भूले भाई. A blade embraces its duty,
as a jeweler cherishes their gems. वेपन सिग्नेचर है, ठीक है, 90 है, कोई डाउट नहीं क्रिट डैमेज ही होएगा, ठीक है। आर्टिफैक्ट ब्लिजार्ड ही रहेगा भाई, कोई डाउट नहीं। आर्टिफैक्ट देखते हैं। इससे अच्छा और मिला नहीं क्या तेरे को? नीरा What's your damage on this Ayaka? Nida. आकाश ठीक है भाई। नीता what's your damage? Ayaka's damage 25%, 80 के 9.3, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये भी चलेगा। गुड आर्टिफैक्ट। इतना कम क्रिट डैमेज और क्रिट रेट नहीं चाहिए था भाई। लाइक 14k प्लस विथ नो बफ। यू नीड टू ग्राइंड आर्टिफैक्ट्स ब्रो फॉर आयाका। What can I say? 999 ठीक है। यूला तो है, ठीक है, यूला तो है। यूला को देखेंगे भाई क्या दिख रहा है। 162 72 यूला का डैमेज। निदा यूलास डैमेज फिजिकल 92 की है। ओके R1 है क्या? 34%। एटी के बिल्ड किया इसको, यूला को। क्रिट रेट ये देख, परफेक्टली बैलेंस पीस दे रही है ग्लैड का। सॉरी पेन। वेलकम टू द स्ट्रीम पेन। नीता इसका डैमेज कितना है अल्ट पे? ब्रो रॉन्ग सेट। हाँ वो मेरे को भी पता है, उसको 80 के बिल्ड चाहिए था यूला, ना कि फिजिकल बिल्ड। ब्रो मेरा यूला 500 के डैमेज देता भाई, फिजिकल बिल्ड है मेरा। वाई यूला नॉट गुड एट ऑल? टॉप 3 का है वो क्लियर डैमेज कैलकुलेटर में, लिस्ट में ब्रो। शी इज ऑन टॉप 3। शी वॉज, आई थिंक सो, शी इज, आई डोंट नो। आया कहा नहीं ना 166.57 ठीक है। 116 मैजिक गाइड। वाह 710 हर डैमेज इज हाई आफ्टर C1। अरे उसको फिजिकल बिल्ड होना, हाँ पता है रोहित, फिजिकल बिल्ड। अरे मैं ईवला मैन हूँ, मेरे को पता है फिजिकल बिल्ड होना उसको। पेन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो। पेन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, रियली अप्रिशिएट इट ब्रो। सब्सक्राइब कर दो भाई जिसने नहीं किया, कर दो कर दो। I have to say good नहीं था। देखते हैं भाई। uh, 34 ओके
ठीक है भाई। आर्टिफैक्ट अच्छे लगे बे, लेकिन पता नहीं इसको बिल्ड कौन सा करना था। $696। I lost Eula weapon banner. Now I don't farm for Eula. What? Eula weapon banner. Why Nida? You want me to revive all the other characters, Nida? Don't have Eula. That's the pain. That's the pain of a Genshin player who doesn't have an Eula in their account. Nah? Ask the player who don't have Eula or Ganyu. hey bro, वो किसी किसी पे डिपेंड करता है, किसको क्लेमोर पसंद है तो किसको ये पसंद है। Nida, would you like to review other characters? Bro. Fuck off. I'm really sorry. भाई ये लोग आते रहते हैं भाई, ये लोग आते हैं। ये what's this? Nignite. Bro, I done farm for Zhongli, but Eula don't have anything good for Eula. okay, no problem, Nida, no problem. Should I review Zhongli? What? Oh, bhai. Osmanthus wine tastes the HP same as build. I remember. But where are Yo, those who share nice the one. memory? Nice one. 165, 150, 56. ठीक है भाई। इसका HP इतना आ रहा कहाँ से? हैं? Ignore that 3 spams. Ignore bro. Ignore it यार, ignore कर दो भाई। Yes bro, माप पे लगा दे उस पे भाई, 3 स्टार मत रख, लेकिन उसके पास होना भी तो चाहिए। भाई वो मिस्त्री है, वो असली अकाउंट से नहीं आया, ठीक है ना। लवली आर्टिफैक्ट किया है भाई इसने, लवली परफेक्टली बैलेंस्ड है भाई। एचपी परसेंटेज, पीटीके। 5, 9, 10। Okay. Should I review other characters? ये है क्या? चली गई भाई। रोहित का भी करना है अपने को भाई। रोहित तेरा ये डाल दे, तुम जब मैं देख रहा था। हाँ रोहित तेरा ये डाल दे, यूआईडी डाल दे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर अकाउंट फॉर द रिव्यू। Nida, only you have to do is change this badass weapon to Mappa.
if you have, or grind for that weapon. So, so much pain. So much pain. समझ सकता हूँ भाई. रोहित मैं समझा. रोहित रुक जा. रोहित रुक जा. भाई तेरा कर रहा मैं अभी. क्या है रे? 82 393 7745. Yeah, thanks. Most welcome. Rice cake 59 here. दो नट. ठीक है रोहित. दो नट. भूताओ देखते हैं. 1100 का डिफेंस है. डैमेज 234 का है ब्रो. अगर ये बोलेगा ना तो फ्री टू प्ले अकाउंट है. देखता है मैं फ्री टू प्ले अकाउंट है. भाई तुम लोग झूठ बोलते हो बहुत. भाई बहुत झूठ बोलते हो तुम लोग. Silly jerk. क्रिम्सन स्विच ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई हुताओ पे. ठीक है. These nuts. Yes, you should have changed that. These nuts. रेशियो देख रहा है 29 का. 20 और 9 का. ओ भाई मतलब ऐसा कोई आर्टिफैक्ट जाना ही नहीं देना जिसमें क्रिट रेट और क्रिट डैमेज है ही नहीं भाई. ऐसा कोई आर्टिफैक्ट नहीं है. ये देख इधर 80 के भेजा. फ्लेम स्प्लिटिंग. ये देख रहा है बैलेंस देख रहा है इसका 28. पे टू प्ले है. वेलकम है. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. हम गरीब लोगों के पास होमा नहीं. हमारे पास होता नहीं. तुम्हारे पास होमा नहीं तो. अभी 3.4 को होता आ रही है ना भाई. मैं पुल करने वाला है. मैंने पीटी बना के रखा 60 का भाई. क्या खड्डे में भाई मेरे को चाहिए होता. हट. मेरे को चाहिए होता मतलब चाहिए भाई. हाँ वो पीस कहाँ गया वो बैलेंस्ड वाला. ये था ना. ये देख ये पीस है बैलेंस्ड. सीवन है. हेलो क्या रे छोटू. ओह माय गॉड. आई सी चीची देयर. क्या क्या हो रहा है तेरे को. क्या मुझे क्या हुआ तो ये कैसा आवाज निकला अभी. हेलो. खिला रही है मुझे Great job, guys. वो सोई हुआ है इधर इसलिए अच्छा लेट्स गो. चीची देखेंगे भाई. चीची देखेंगे. 10 10 10 भाई. कुछ नहीं तेरे को नहीं बोल रहा मैं. तू खेल रही क्या. हाँ नहीं मैं घर पे हूँ ठीक है. ये है आया का. मिस्री आ गया ग्रुप. नहीं आना अभी तक. कौन आया फिर अभी ये छोटी आई है. हाँ। जेंशिन वाली. नहीं लॉरी आई है. लॉरी. आयोरी. A blade How? embraces its duty, चूती है उसको as लॉरी a बोलता jeweler है. cherishes हाँ, their वो वो पहले gems. से भी लॉरी बोलता है छोड़ मैं भी बोल के थक गई हूँ अभी मोहो इनको लॉरी बोलता भाई. तो पूछ लो भाई पहले चूड़ा खा रहा मैं. चूड़ा. चिवड़ा दिवाली वाला. खाओ. चकली है. चकली अच्छा लगता है. चकली के साथ ओल्ड मांग अच्छी लगती है बे. ये ठीक है. क्रिट डैमेज 4 स्टार. ब्लिजार्ड. मिस्त्री आज नहीं आएगा शायद क्यों. हॉस्पिटल गया वो मम्मी को ले गए. हम्म सीरियस है क्या कुछ. नहीं रे चेकअप. हाँ ब्रेकअप. भोसड़ी का कुछ बताता नहीं है बहनचोद मेरे को. क्या बोला ब्रेकअप.
नहीं रे बाबा, चेकअप बोला मैं, अब चेकअप। भाई चेकअप। ब्रो ये क्या आर्टिफैक्ट्स है? बाय द वे हाउ वाज योर दिवाली? थैंक यू फॉर ये आस्किंग कर आकाश। फोर्स बाय करो। थैंक यू फॉर आस्किंग। खेलेंगे मैच उनके मां का दिवाली भोसड़ा। बहुत लवली था भाई मेरा। एक तू फटाका नहीं भाई जलाया भाई, एक फटाका नहीं जलाया। वो लवली हुआ। हो क्या रे मम्मी? फटाका जलाता कौन है बे? फटाका पटाने का रहता है चूतिए। क्या गुंडा बनेगा रे ग्रुप तू? हाँ क्या गुंडा बनेगा तू? तभी तो मैं सिंगल पड़ा है ना अभी तक। वी डोंट सेलिब्रेट मच इन न्यूजीलैंड। सिंगल Like रहे भाई, no हैप्पी friend, no बेस्ट है लाइफ fireworks. को। सिंगल लाइफ बेस्ट होता है, पता है तेरे को लोड़े? ओ भाई हाँ भाई। आकाश, आकाश ये चैट न्यूजीलैंड से चल रही है क्या? हाँ क्या इंडिया वर्सेस कुछ तो मैच है आज? नहीं, भोसड़ी के मेरे चैट में बंदा है वो न्यूजीलैंड से है। उससे बात कर रहा हूँ मैं। ओ आओ तो लड़का है लड़की है? लड़का है रे फिर क्या मतलब? भाई, मेरे को है दिवाली अच्छी नहीं गई। क्यों रे पेन, क्या हो गया? ये अच्छी नहीं गई। ठीक है भाई। पेन क्या हो गया? बहुत बहुत क्या? यस आई एम फ्रॉम एनजेड। ओह नाइस नाइस। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, तुम सबके आर्टिफैक्ट देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फटाफट भेज दूँ 55 एआर से बाहर निकल गया हूँ भाई। मैंने बस अनार ज्यादा और कुछ नहीं। अगर खेलने वाली है? नहीं, मैं घर पे हूँ। अनार कैफे जाने ज्यादा। वाली है क्या? नहीं। कॉलेज जाके थक गई? हाँ रोज कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। क्या चलता है गुरु? जिसको चाहिए वो जलाता है पटाखे, जिसको नहीं चाहिए नहीं जलाता। अरे पटाखे बहुत सड़ी के पटाखा पटाना अलग रहता है, जलाना अलग रहता है। यार तू बात कर रहा, मैं कुछ बोला? हुक्का 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 मार हुक्का मार हुक्का मार। ब्रो आया का मस्त बिल्ड है। डैमेज क्या आया काका रोहित? क्या काका डैमेज अगर पता चलता तो कैसे एकदम ईतो है बे भाई, इसके पास ईतो है। रुक जा, हट जा। जीरा है इसके पास भैंचोद। हीरा क्या बोल रहा है गांडू? जीरा नहीं जीराया बोला मैं, जीराया। ठीक है द भाई। टेल ऑफ नरूटो, उसकी माँ की। ठीक है ना ब्रो, मेरे पास ये कैरेक्टर है नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं ये किस पे बिल्ड है। ओके नो प्रॉब्लम आकाश, नो प्रॉब्लम ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। समझता उतना बास है। ये तो क्या बिल्ड है? 80 के बिल्ड है या माँ ये? का भोसड़ा मादरचोद। अरे तू तुम्हारी का पीछे क्या कर रहा है? पीछे खड़े रह के लोड़े। वालो खेल रहा क्या? हाँ ये वैलो खेल रहा है। आटू सिल्वर टू हार्ट्स तक बोलते आया का देती है ठीक एजेंट का स्क्रीन आता नहीं कि जहाँ के लोग रब करके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक ठाक देती मतलब कितना डैमेज देती है? ठीक ठाक क्या होता है? ठीक ठाक बोलेगा तो 100 के। हाँ मेरी इवला इसका पाइप पेन इवला चाहिए तेरे को भाई, क्या ही बोलूं मैं मेरे अभी को बता। नहीं खेलने का, ये गेम ही चूतिया है भाई। मैं इसलिए गेंशन खेल रहा ना भाई, स्ट्रेस फ्री। अबे स्किल्स लोड़ू। ऑफ डिफेंस। हाँ क्या रोहित, डिफेंस पे बिल्ड है क्या ये? हाँ क्या बोल रहा है? ओ भाई वाह मेरे को नहीं पता था ये डिफेंस बिल्ड है, क्योंकि मैंने कभी आया तो के लिए पुल ही नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं कैरेक्टर क्या है ये। और डिफेक्ट तो अच्छे लगे भाई। हस्क ऑफ उलंड ड्रीम्स। भाई मैं बूस्टिंग कर रहा हूँ अपने अकाउंट का, मेरे से नहीं हो रहा है भाई।
नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है बूस्टिंग कर रहा है मतलब? भाई। मैं किसी को दे देगा अपना अकाउंट, खेलो। हाँ, दे 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 दे। मेरे को दे, मेरे को दे। ये देख गाँव बसाने की लुटेरे बहन। डिफेंस बिल्ड आकाश सब समझ रहा। 23 के। अबे तेरे यूट्यूब वाले जो ये है बंदे, हाँ उनको डिस्कॉर्ड का आवाज आता है क्या? हाँ आता है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसका भी आ रहा है? हाँ क्यों ना? पूछ रहा था ऐसे ही। अरे मैं गाली दे रहा था ना जोर जोर का। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो दे रहा। तो ऐसा अपना थोड़ा इमेज डाउन हो आई जाएगा कैन ना। अंडरस्टैंड। नहीं कुछ नहीं। हाँ भाई। अरे भाई कैसा है? 47 के तक जाता है ई पे भाई। ई 47 के बोल रहा भाई। आप कर दे और कोई दिक्कत नहीं। यस डिफेंस पे स्केलिंग करता है ये। ठीक है ठीक है। हिजिटोस नॉट अयातो लॉल। हाँ क्या मैं कुछ गलत बोला क्या? बहुत गलत बोला। आकाश नाम गलत लिया था मैंने? कोई दिक्कत नहीं। मैंने डोमेन खेलना ही छोड़ दिया। ईटो का डोमेन। भाई इतना बिल्ड करने के बाद कौन क्या खेलेगा भाई? क्यों खेलेगा? मेरे को पता है गवर्नमेंट क्यों खेलेगा। ये देख 10 10 10। एक्सक्यूज मी। कंजुआ कंजुआ यार। ब्लाइंड दे ब्लाइंड दे ब्लाइंड दे ब्लाइंड दे। कंजुआ यूज किए तो Ito has like 2700k defense, so he क्या hits टीम भाई, तू क्या टीम? डिलीट कर दो, माते a छोड़ो। bit harder, but same build. Okay, आकाश ठीक है भाई। So Akash, I need to know how many 5-star characters do you have right now in your account? Android, you too. Accept this display shows. 3 star 4 star ठीक है भाई। भाई आर्टिफैक्ट ग्राइंड करो रोहित, आर्टिफैक्ट ग्राइंड करो कादुआ के लिए। वैसे ऑलमोस्ट जो चाहिए वो तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रो। जो चाहिए वो तो है। माफ करो मैं चूतिया है। हाँ अब सबको पता है, वो बता मत। माफ करो। ये मेरा एक्सपेक्ट था, ये क्राउन रहेगा रे तेरा। 16 नाइस पे नाइस 16। आई हैव टू सी डिड काउंट। ओके ब्रो, वो ईएम है सपोर्ट, मेरे को भी पता है रोहित। मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे को अभी पता चल गया, तुम लोग ने बताया कि भाई काजुआ है वो ईएम है, ईएम बिल्ड है और वो सपोर्ट है। भाई सपोर्ट पे भी कुछ करता रहेगा ना मैं। ओ भाई शैंक्स आ गया, शैंक्स मंकी डी लूफी का। कौन था वो? स्ट्रॉ हैट। आफ्टर रोहित माय टर्न। ओके पेन, नो प्रॉब्लम, योर टर्न। चलेगा अभी, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। 14673। अभी मेरे को डीलुक बिल्ड बताओ क्या है। इसने 80 के बिल्ड किया हुआ है, डीलुक बिल्ड क्या है? 80 के ही है क्या डीलुक? मेरे पास है नहीं ये कैरेक्टर।
16 5 stars। मैं जा रहा हूँ दूसरे Characters विच पे exclusive- बैठूंगा भाई। क्यों? रुक जा। कहाँ में रुक जा मेरे को हाँ हाँ किधर ठीक गया है वो? ठीक है ठीक है। है क्या एक्सक्लूडिंग दूसरा ट्रैवलर। विच पे गया था? ओ भाई आकाश नाइस। कौन गया? उसको वो दूसरे वीसी में गया किसी और के शायद। हाँ। ये आपने उसका कुछ काम हो रहा। ये ठीक है ओके। एनर्जी रिचार्ज देकर रखा। तो मेरे को कब मिलेंगे भाई? तुम्हारे अकाउंट के इतने भारी भारी आर्टिफैक्ट्स है ना। 4P स्क्रीन ठीक है एटलीस्ट 2K 60x180 में भी। ग्लैड लगा ना इसका 2 से। एट 9 ठीक है। शोगन भाई शोगन शोगन भाई ईवला है ठीक है। ईवला ठीक था वाली है ठीक है। अपने को पसंद है भाई। ईवला जितना था किसी को भी नहीं है। मैं डीलू को यूज़ नहीं करता वैसे भी। ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं। वो गलती से आ गया रहेगा तेरे पास। 143 68 225 भाई आजकल ये किसी को भी स्टैंडर्ड बैनर पे मिल रहा है भाई। ये प्रीमोडियल जेड। हम शोगन के मामले में गरीब है। शहने देखी क्या? देखता हूँ रोहित रुक देख रहा हूँ। शहने देख रहा हूँ। शहने रोहित शहने भी है क्या? भाई नहीं भाई आर्टिफैक्ट मेरे को जब अच्छे पीस मिलेंगे ना तभी मेरा होएगा भाई। नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं होएगा। ये देखिए क्या है यार आर्टिफैक्ट नहीं मिलते भाई मेरे को। शी बहुत घटिया नसीब है मेरा आर्टिफैक्ट। 389 3910 ईवला से अच्छा फिगर है भाई। रोहित रहने दे भाई। रोहित रहने दे भाई। पूरे गेम में सबसे ठीक था ईवला का है भाई। और हम लोग को वो पसंद है ईवला मेन्स वाला वो ठीक है ना। चीची देखते हुए चीची देखते हुए One, चीची two, देखते हुए इसके अकाउंट ठीक है। 3, 4, and पेन तू तेरा ये टाइप करके रख यूआईडी टाइप करके रख। इसके बाद तेरा अकाउंट ले रहा मैं ठीक है। पेन मम्मी दादा वाला होता। By the way, love your thumbnail. भाई पेन वो YouTube से निकाला हुआ है रे। हेलो हाँ हेलो हेलो जीबी बोलो। क्या रे? हाँ बोलो ठीक है भाई। बोलो 1, 2, क्या बोलूँ? breathe. 3, कुछ भी। 4, and आजकल वैलो नहीं खेल रहे हैं। कौन? मैं नहीं वैलो नहीं खेल रहा। मैं आज क्यों? गेंशन खेल रहा भाई। दिमाग ठंडा रखना है। चीची नॉट बिल्ड शहने का है ठीक। शहने का भी नहीं है भाई। रोहित ये तू अंधश्रद्धा में मत रहे कि शहने का भी है भाई। ठीक नहीं है भाई शहने का ठीक था ठीक है ना। क्या हुआ? हमारी बात चल रही है भाई। ठीक था एक कौन से कैरेक्टर के गेंशन में। अच्छा
मैंने डाउनलोड किया, वो क्या बोलते हैं गेम? कौन सा गेंशन? नहीं आरोही? गेम, हाँ अभी भाई अच्छा गेम मेरे आरोही, माँ कसम। अभी भाई पता है, मतलब कल मैं स्टीम में डाउनलोड कर रहा था। हाँ हाँ, हाँ कितने कितने कितना स्पीड आ रहा था पता है नेट का? हाँ। 90 kbs। केबी? हाँ ब्रो मेरे को तो 11 MB जा रहा था भाई। और वो ऑफिशियल है ना, तो जो स्पीड है ना वो एक्चुअल स्पीड दिखाता है। हाँ पता है। और फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सेटिंग वेटिंग किया मेरा नेट का, तो क्या पता थोड़ा मतलब ये लिमिट था मेरा एक स्पीड। आकाश नो प्रॉब्लम, उसने स्पेलिंग मिस्टेक किया, अपन ने समझ लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट कोई करोगे दिक्कत आप? नहीं आकाश, हाँ स्ट्रीम चालू है ना। अच्छा, तो मेरा ये क्यों नहीं हो पता चल रहा, मेरा सेंसी थोड़ा मतलब Benny's अजीब adventure लग रहा है team, मेरे को, पता नहीं क्यों। assemble! वैलोरेंट का अगर ये सेंसी सपोर्ट है तेरा तो ये 200 क्यों नहीं है यार? क्या? मोस्टली 183 तक ठीक है। Or not. अरे नहीं, वो मतलब मेरा नेट का थोड़ा ये हो गया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मतलब मेरे पीसी में ही मैंने कुछ ऑफ करके रखा था, तो मैंने वो ऑन कर दिया। फिर जो Ow! स्टीम का ना, स्टीम का Where जो did that सर्वर come होता है from? वो है ना मुंबई कर दिया, ठीक है। हाँ 20 MBs ऐसे, 20 MBs, हाँ, तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, ऐसा ही है कुछ तो। 20 MBs ऐसे आ रहा था मतलब। हाँ भाई अच्छा। देख Benny's C2 adventure ना, team, सीची C2 assemble! भाई, मेरे पास सीची पता नहीं कौन सा है भाई। कितना 2 है कितना 1 है मेरे को देखना पड़ेगा। मैं तो 4 स्टार के पास देखता भी नहीं भाई, मेरा बस एक ही टीम है। Or not. वेस्ट मैच भी मैंने नहीं खेला है। शहने वाले एक साइड, युवला वाले एक साइड, ठीक है ना आकाश? ब्रो फिजिकल डैमेज दे के रखा है इसको। नोबलेस दे के रखा है। नोबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बंदा है, बंदा है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आईजी नील। He's talking about Benny and the other guy is talking about next week. वाह भाई, चलता है भाई, चल सब सब चूरन चपाट है अपने इधर, सब मिक्स होता है ऐसा, खिचड़ी राइस जैसा। कंफ्यूज है। कोई दिक्कत नहीं भाई। देखते इसका बैनी बोनट। भाई यार मेरे को सच्ची बताओ, 55 AR मेरा अगर मैं क्रॉस होता हूँ तो मेरे को ऐसा आर्टिफैक्ट मिलेगा क्या भाई? विदाउट पे ब्रो, विदाउट पे ऐसा आर्टिफैक्ट मिलेगा क्या मेरे को भाई? क्या ठीक है है, यार, ठीक है, ठीक है। क्या आर्टिफैक्ट है यार ये? नहीं करना था, ये नहीं करना था। मैं रिकमेंड करता हूँ बैनी को मैक्स C4 तक, ठीक है? C4 के आगे उनको ये नहीं करना है भाई। C4 ना, रुक जा, नहीं ये पढ़ नहीं सकते ना। C4 C3 C3 मैक्स में ये करूँगा भाई। क्या You लक need है AR-45 to get a ये। good artifact. Bro, I'm AR-55. I'm not getting good artifacts, bro. I'm AR-55. भाई मैं क्या बोल रहा भाई? क्या बोल रहा है भाई तू? अरे AR-55 मेरे को आर्टिफैक्ट्स नहीं मिल रहा भाई। अच्छा अच्छा 13, ये देख रहा मैं देख रहा, ये देख हेलो, देख रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो रोहित, थैंक यू फॉर हेलो। गिविंग योर अकाउंट फॉर एन रिव्यू। भाई बिल्ड तो अच्छे है, ठीक है ना, बिल्ड अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं। स्पाइरल लेवल्स 12 टीम है भाई, कोई दिक्कत। डोंट C6 और C5 इज ओके। क्या लक है रे। C5 इज ओके भाई। C5 मैं तो भाई C4 तक ही भाई, उसके आगे नहीं जाना भाई बैनी के लिए। वो फिर वो तेरे अकाउंट में ना पूरा ये लग जाएगा, क्या बोलता है, बैड लक लग जाएगा बैनी को C6 करेगा तो।
कौन है ये भाई, कौन है ये? यस C5 ओके। पेन तेरा आईडी दे, पेन तेरा आईडी दे ब्रो। C6 इज नॉट गुड। पेन का यूआईडी 81 37 23 681। भाई ये क्या चल रहा भाई? क्या चल रहा भाई? कोयोमी यूला कम होम। यूला कम होम। ठीक है भाई। पेन 90 गानियो भाई। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। AR क्या है? 59। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भाई। गानियो 222 का डैमेज भाई, और क्रिट रेट अगर तेरा 40 भी रहेगा तो भी चल जाएगा। 40 भी रहेगा तो भी चल जाएगा भाई। इतना ये क्यों हो रहा है मेरा? होता है क्या हो रहा है? पता नहीं, नेट हग रहा है इधर, मतलब अटक रहा है एक एक जगह पे। तू वो गेम खेल रहा है क्या? कौन, मैं? हाँ मैं, हाँ। ROE खेल रहा है? नहीं, वैलो। अच्छा हेलो, ठीक है खेल ले। देखता हूँ आरोही मैं, उसको थोड़ा ये करना पड़ेगा ना। भाई तो क्या है यार ये आर्टिफैक्ट यार, मेरे क्या पास है? थोड़ी ना ऐसा RTX है जो तुम हाई क्या है यार, इसलिए अंबर का ठीक रखा है। उसकी क्या लक है भाई, क्या लक है भाई। हमको भी ऐसा लक दे दो प्लीज। पेन ना समझ ना सकता हूँ, तेरा दुख दर्द समझ सकता हूँ मैं। भाई, एक लेवल का प्लेयर वन टाइम मार रहा है, मतलब वो भी चल के। अरे वो तो ये है, स्पर्फर है, स्पर्फिंग कर रहा है। नहीं, स्मर्फ नहीं कर रहा लौंडा, उसका ये मतलब। Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. आ रहे। पेन अभी तक तूने कितने उताव देखे अभी तक रिव्यू में? ये डैमेज कितना देता है बताओ बर्स्ट पे? पेन मेल्ट पे कितना डैमेज देता है ये? Toodaloo. ड्रैगन्स बीन। लेट्स गो। ओ भाई वेपन अच्छा लगा है भाई। तू नहीं 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 नहीं। ओके ओके क्रिम्सन विच। मेरे को हुताव चाहिए। इसको जापानीज में कैसे बोल देंगे? यामिते क्या? कुदासाई। नहीं, तो मेरे को ना पता नहीं जापानीज, मेरे को बस कुछ डायलॉग है ये पता है। छोटी तेरे को पता है क्या? मेरे को हुताव चाहिए 300 के बाद, ठीक है? मेल पे 300 के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था 500 के में। एक्सपेक्ट 500 के कर रहा था मैं ब्रो, मिनिमम। Maori not ready. कौन है पे? 20 मान गया। मेरा ना मतलब अभी सर चकरा रहा है भाई तुम लोग के अकाउंट देख के कि भाई फोर फोर। हाँ हाँ भाई मतलब क्या है ना भाई, ये इतने खतरनाक खतरनाक आर्टिफैक्ट्स भाई तुम लोग को मिले हैं। नहीं बीच भाई। और हमें क्या ये योई मिया 80 के बिल्डिंग है।
बंदा दो, I don't बंदे have दो, you. बंदे दो। क्या खेल रहा है कुछ? कोई तो आवाज आ रहा है इन गेम का। कौन खेल रहा है ये? पता नहीं भी किसका तो आ रहा। ये फ्री फायर कौन खेल रहा नहीं फ्री फायर नहीं है ये चीहा। है? ये टॉक्सिक। हाँ? हाँ टॉक्सिक ही खेल रहा है। फ्री फायर क्या हुआ? करना थोड़ा 4 किल। ये 34 किल। मीको का बीड क्या है? मीको का ये क्या है? सेट कौन सा लगता है मीको को? नन्नारे नारे नानी नारो नारे नारे क्या चल रहा भाई? नन्ना रे नार। नंगा। ओए क्या है पता है मेरे स्टोर में? रिवर्स स्पेक्टर, सेंटिनल फ्लाइट ऑपरेटर, कॉन्वेक्स शेरिफ और क्या है ल्यूक्स ऑपरेटर। क्या भाई मिलेगा भाई? भाई ये अभी जो तो तुम लोग के आर्ट इफेक्ट देख रहा हूँ ना यार, एक बार ना तुम लोग रुको। फ्री फायर क्या चाहिए तेरे को? दुनिया नन्नारे भाई नारे नारे तन्नारो नारे नारी ना। मुंह में ले ले, तेरे को पूरी दुनिया मिल जाएगी भाई। करोड़ों लोग हैं मेरे दुनिया में, ठीक है ना? बस तू मुंह में ले ले, सब तेरे मुंह में आ पूरा जाएंगे। मूवी भाई ने नन्नारे नारे पे निकाला है। कुछ होता नहीं, नन्नारे नारे। ब्रो मतलब तेरे को मैं मेरे आर्टिफैक्ट दिखाता हूँ, पेन। तू समझ सकता है भाई मेरे आर्टिफैक्ट क्या है? भाई मैं रिंगटोन लगाने वाला हूँ अभी। तेरे को मैं मेरा ईवला का बेल्ट दिखाता हूँ, पेन। तेरे को ईवला देखने का ना? उला ईवला दिखाता मैं तेरे को, उल्ला ठीक है? शोगन देखते उला। तेरा शोगन यार, ठीक है भाई? उल्ला भाई उल्ला 278 भाई, लवली। लौड़ी। ये जो क्या होता है लवली नहीं, ये होता है लवली ना? बोला मैं। नहीं ये कैच हेलो एक्सपेक्टेड था, 4 स्टार कैच। हेलो। आर्ट इफेक्ट दिखा भाई, आर्ट इफेक्ट एम्बल अरे यार क्या होता है भाई। हाँ? कलेक्शन में जाने दो। वैल्यू में मेरे पास ये जो तेरा रेशियो है ना 31 और 20 का भाई, अभी ये वीडियो किसने भेजा? वैलोरेंट बट इन दिस द बेटा अनाउंसमेंट। रेवन वैलोरेंट भाई ये क्या करके रखा है लोग ने गेम को? भाई फोर्टनाइट बनाया क्या वैलोरेंट को भी? हाँ भाई चुत्ते रे लोग, हमको क्या भाई, मालूम नहीं क्या पीस देख रिवाइव भाई। दे रहा है क्या नहीं कर रहा है? भाई ये पीस कब मिलेंगे मेरे को यार? ऐसे शी बेबी। क्या चाहिए तेरे को? 10-10 भाई, एक्सपेक्टेड है 10-10 रहेगा ये। क्या चाहिए? दुनिया नन्नारी नारे नारी तन्नारो नारी नारी ना। सारा भाई वो मूवी भाई वो मूवी पूरा वही है भाई, नन्नारी नारे पे ही है। मूवी का नाम क्या है बताओ? सारा के साथ यूज कर रहा है क्या? KGF। नहीं छोटा भीम बोलूंगा, छूती है। छोटा नहीं छोटा भीम में आता है ना ऐसा वर्णन, नन्नारी नारे। नहीं कुछ ना तो भी कुछ करके डालता। यार 163 आयरन स्ट्रिंग, यही देखा है वो तो भाई है। बहुत लोगों के पास। आ गई, कौन है ये? बोर हो गई। वही बात है। आकाश। आ गई। मैं कौन सा कलर लगाऊं? भाई क्या बोलते हैं आयरन वैंडल का? समझ नहीं आ रहा, ब्लू लगाऊं, येलो लगाऊं, ग्रीन लगाऊं या तो व्हाइट लगा रखता हूं। तो वाइट बेस्ट आकाश भाई। थोड़ा रुक हाँ जा तू आयरन भाई। आयरन के लिए व्हाइट ही बेस्ट है। तेरे को फिर से अरे डालना पड़ेगा क्या तेरा? फैंटम चैंपियंस में अगर स्किन चला करके कलर चेंज होता ना मस्त होता है। तेरा आईडी दे, यूआईडी दे फिर से। फिर रुक जा, मैं ले रहा, चैट में से ले रहा भाई। मुझे क्या चाहिए पता है? नाइफ में RGX ब्लेड बटरफ्लाई नाइफ। ब्लेड नहीं बटरफ्लाई नाइफ। हाँ ऐसे चक्री चक्री जैसे माइक में हाथ में ऐसे थूकना बंद कर। है हाँ भाई ठीक है भाई, आ जाएगा भाई तेरे को। ऐसे चक्री के जैसे घुमा मेरे को हाथ ऐसे 23681 मैं कुत्ते देख रहा ये, ठीक है। हाँ अपना क्या चल रहा था? काजुआ चल रहा था ना अपना।
Live. अरे कोई नहीं आ रहा है। अरे हेलो T1 999 ठीक है भाई। रिवर्स स्पेक्टर ले लूं क्या? ले लूं? ये आकाश है क्या? बताओ। हाँ वो आकाश ही है, वो आकाश ही आया है। रिवर्स स्पेक्टर ले लूं? बताओ जल्दी बताओ। हाँ नहीं मत ले, Reverse spectre। तेरे को चाहिए तो ले ले भाई, तू खेलता है तो ले ले। इस पे ग्राइंड करो, नाइडा पे ग्राइंड नहीं। करो, नाइडा के लिए ग्राइंड करो। 80 है 90 करो। 90 करो 90 करो। मत ला। सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट्स मापा नहीं है क्या? न्यूजीलैंड है? वाला, हाँ वो न्यूजीलैंड वाला ही है वो आकाश। क्या हो। पापा नहीं है, क्या नहीं है, क्या बता रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ हेलो 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 पेन हेलो, ग्राइंड हेलो। करो Knights and पेन। aristocrats share the same cultural Fuck. heritage. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. इसका एक पीस किसको दिया तूने? मेरे हेलो 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 हेलो। हाँ आवाज आ रही है तेरी। हाँ तो माइक मैंने शिफ्ट किया ना तो। पहले संडास में से आवाज आ रही थी, अभी अच्छी आवाज आ रही हाँ वो इंटरनल माइक्रोफोन में शिफ्ट था है। ओ तो अब माइक्रोफोन में शिफ्ट हो। भाई नाइडा बिल्ड करो, नाइडा बिल्ड करो। You want to learn some Favonia's blade क्या work? नोएडा बिल्ड करो? All right then, अच्छा है I'll भाई। teach you. Oh yes, वो I'll तो teach you all अभी- right. क्या बता Mark रहे हो, क्या my बताना words. चाहते हो? हाँ अभी मिली है, मैं जानता, मैं जानता। किस्मत आया तो। ये ग्रुट ग्रुट पागल हो चुका है बे। क्या पागल हो चुका है? मैं अकाउंट रिव्यू कर रहा है भोसड़ी के। अच्छा रिव्यू करने लगे क्या? गेमिंग छोड़ दिया क्या? नहीं हो रहा क्या गेमिंग? गेमिंग भी कर रहे हैं ना, रिव्यू भी कर रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है भोसड़ी का। चलो मैं कॉम्प ही जा रहा हूँ, कॉम्प जा। अबे तो जा ना, तो इसी पे तो रुक जा। अच्छा ठीक है। तुम्हारा वॉइस में कम कर ले तो बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा आ रहा है एकदम। कान में चुभ रही है तुम्हारी आवाज एकदम। अच्छा अभी मेरी आवाज चुभ रही है? भैंचोद पैसे मांगता था। अरे नहीं ऐसा चुभ नहीं रहा, मतलब आवाज बोलते हैं ठीक है। नोएडा ठीक है भाई, नोएडा भाई। मेरे पास आया तो चलो, नहीं है, आया तो क्या है? 70 रखा है मैंने। ठीक है ठीक है। आया तो क्या है? 80 के बिल्ड है क्या आया तो? हिंताई किस्मत हो, हिंताई देखो, हिंताई हिंताई। किस्मत हो आया तो। क्रिट डैमेज भर भर के दिया हुआ है। जेट खेलूंगा, जेट 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 में। अबे ये तो फिर इस पे अगर फिर तू आयाका का पीस भी डाल देगा तो भी चल जाएगा ना रे, ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है। नहीं ये कौन है? रुक जा, हाइड्रो है बे। नहीं भाई माफ करो मेरे पास नहीं है ये कैरेक्टर, प्लीज माफ करो अगर इधर भाई। कोई इंस्टॉल अगर हुआ ना अभी मार देगा। माफ करो भाई, गलती से निकल गया, मुंह से निकल गया भाई। ए हमें हार्बर खेलेगा, मैं हार्बर खेलूं क्या? छी बे। खेल ले अच्छा खेलूं कैरेक्टर है। क्या? कल ही अनलॉक हुआ मेरा हार्बर। अच्छा ऑलरेडी कंट्रोलर है, ऑलरेडी कंट्रोलर लिया है किसी ने। भाई पीस देख इसके यार, पीस भाई ये देख 1931। Knights and aristocrats share the same cultural heritage. But the क्या knights had लूं? enough क्या sense to do लूं? away with all हीलर the लूं क्या? superfluous detail. हीला लूं क्या? हेलो 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 हीला लूं क्या? ले घाप घीप क्या मारता रहेगा रे 10 पे ये। घाप घीप नीलू। अबे यार ये एस्ट्रा भाई वो एमदे कुदासाई वो नीचा ये सब कर रहा है। हाँ क्या? मैं भी जाऊं क्या वॉइस चेंज लगा? जा 128 नीलो भाई, नीलो ओपी। नल्लो Aristocratic etiquette is all just for show. नहीं, Time to just smile and nod along. अच्छे है बट फार्म नहीं I was किया। forced to learn all of the rules by heart. फार्म But even I काम don't करो, take them that seriously. अच्छा बनेगा वो। क्या बोलते हैं? हेलो ग्रूट हेलो। हाँ बोलना। तुम आरएल क्राफ्ट खेलो क्या? हाँ आरएल क्राफ्ट वो माइनक्राफ्ट वाला। हाँ माइनक्राफ्ट का आरएल क्राफ्ट खेलो क्या कभी? खेले हो क्या? नहीं खेलना है क्या? अच्छा है, मस्त है एकदम। अरे पर मेरे grind पास बहुत है। बाय वाला माइनक्राफ्ट नहीं है ना। You want अरे to वो learn T1 से some भी चल जाता Favonia's है। blade work? टीएल से चलता है वो। All right then, हाँ I'll teach मॉड you. है ना उसमें। Oh yes, ठीक है
I'll teach you all right. 1.12.2 Mark या तो my कुछ है उसका words. वर्जन। कर लेंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं। मस्त है, तो मिस्त्री को बोलो, मिस्त्री मैं क्या लेगा ना? हार्ड है, लेकिन हार्ड है। अब कोई दिक्कत नहीं। इसकी ये मैं ते कुदा साई साल इसकी। भाई क्या हो गया? रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। नेट हक दिया क्या मेरा? आई कैन बगा बगा बगा। ब्रो नेट हक दिया क्या मेरा? हेलो अरे यार। हेलो हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही? अबे लड़की। अबे यार इसकी। ठीक है। ब्रो नेट सही चल रहा है ना मेरा? रिफ्रेश करो, फिर रिफ्रेश करो। स्टीम पे मेरे को लोडिंग दिखा रहा है भाई। OBS अस्त्रा ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। आजा। ये नीलो का क्या बिल्डर है? ये मरा। मेरे पास नीलो भी नहीं है भाई। ये सब जो अभी नीलो पे तेरे आर्टिफैक्ट है ना, जो भी आर्टिफैक्ट अभी नीलो पे है ना तेरे, अब उधर से मार दिया ले। What the fuck? नाइस। जो भी नीलो पे जितने भी आर्टिफैक्ट है अभी, वो सब आर्टिफैक्ट मेरे को मिलते हैं, ठीक है ना? अस्त्रा आवाज नहीं आ रहा क्या फुटस्टेप का? ये दो टेनासिटी छोड़ के। You want to learn some Favonia's blade work? दो टेनासिटी छोड़ All के। right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. अस्त्रा मरवाएगा, अस्त्रा मरवाएगा भाई। नेट गया क्या रे? नहीं भाई, नहीं है बे। अस्त्रा अस्त्रा भाई भाड़ में जा। नो ब्रो, अनरेटेड। इट्स अनरेटेड। रुक जाओ चैट, रुक जाओ 2 मिनट, जरा नेट का दिक्कत हो रहा है मेरी। अब इसकी माँ का नीचा इसकी बेस। Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. HP पे स्केलिंग है, यस ठीक है। अबे ब्लूम टीम पे बेस्ट है ये। अबे यू क्यों? रुक जा पेन, 2 मिनट रुक जा। मैं तेरे को ईगला दिखाऊंगा, लेकिन मेरा जरा नेट का मैटर हो रहा है। फेड फेड अब फेड अपना कुत्ता डाल। आई मीन कुत्ता डाल, कुत्ता डाल, कुत्ता कुत्ता। नॉट 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 ऑक्टोपस। लौड़े फेड के पास कब से ऑक्टोपस आने लगा बे? क्या रे? मेरा वाईफाई डिसेबल हो गया, 2 मिनट रुको। ऑटोमेटिक डिसेबल हो गया मेरा वाईफाई। प्लांट कर प्लांट कर। हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रहा था। हाँ टैलेंट 9 है भाई। फक। थैंक यू पेन फॉर गिविंग योर अकाउंट फॉर एन रिव्यू भाई, थैंक यू सो मच। कांट रिव्यू देने के लिए भाई। मेरे को अभी समझा 55 रैंक के बाद क्या मिलेगा मेरे को। ठीक है चलो, ये चलेंगे चलो, ये चलो। भाई मैं कॉप में हूँ क्या अभी भी?
You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. हाँ वो Oh अपना वाला yes, आकाश ही है। I'll teach you all right. Mark my words. मेरा ईवला बिल्ड देखेगा? उसके लिए तो रुके है। एरन येगर, यो बॉय, वेलकम टू द स्ट्रीम एरन। एरन, वेलकम टू द स्ट्रीम। ब्रो मेरा सेकंड पीसी को क्या होगा पता नहीं, रुक जाओ। उसका नेट आ रहा है जा रहा है भाई। चैट नहीं पढ़ पा रहा था मैं। 2 मिनट रुक जाओ बस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो बे। अरे कवर तो दो यार भाई, कवर दो कवर दो कवर दो। यूला दिखा रहा मैं, यूला तेरे को। नाइस वन। मैंने यूला फिजिकल बिल्ड किया भाई। नाइस वन। Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the Fade, rules give me by a bar. heart. Fade, give me a bar. यूला ना I मेरा don't take them फिजिकल that बिल्ड है, seriously. ठीक है। वेपन में मैंने ये R3 कर दिया है। और टेक इन माइंड मेरा फ्री टू प्ले अकाउंट है, मैंने 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं किया है अकाउंट। ईवला का बैनर जब आया था ना तभी मैंने पुल किया था 10 पुल में। ओ भाई रिवर नाइस लक था मेरा भाई। ए चलो ए चलो ए चलो 10 पुल। ए चलो ए चलो ए चलो। ठीक है, अरे ना तो पीछे से जो मैं तब आगे से लगा मैं था यूला ना। में हूँ अरे और ना, अभी ना, तक पीछे, यूला ही पीछे, खेल रहा हूँ मैं। चल 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 ये चल। मेरा है 34, ये 4 स्टार। कोई ना, कोई ना, पेन रश, फ्लेम रश, लगा है, रश, 4 रश, सेट रश करो, फिजिकल रश करो। डैमेज। रश करो बस। ठीक है, ये मेरा आर्टिफैक्ट्स है, ये मेरे आर्टिफैक्ट्स है। घटिया। भाई क्या गंदा हवा में छी। ये देख, ये रेशियो देख, ये ऐसा आर्टिफैक्ट तेरे नीलो पे थे भाई। ये क्या है देख रहा है? आर्टिफैक्ट देखिए, सबस्टैट देख। नाइस वन। वैंडल ले ले, वैंडल ले ले। Knights and aristocrats share the same cultural heritage, ब्रो but the सबस्टैट knights had देख। enough sense to do away with all the superfluous detail. कॉन्स्टलेशन 0, टैलेंट 10 10 10। प्रोफाइल में क्या ही लिखा हूँ? लवाओ भी। नाइट ऑफ ऑनियस। झोंगले बिल्ड है मेरा। Aristocratic etiquette is all just for show. एक Just झोंगले बिल्ड है smile भाई। and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take buy them me a that vandal. seriously. Arena, can you buy me a vandal? Arena, can you buy me a vandal? Hello. कौन है बे? Thanks. Knights and aristocrats share the Osmanthus wine tastes the same as गेम I का कुछ हो रहा है, remember. बीटा अनाउंसमेंट है। But where are those who share the memory? B. चैट बीच में ही आ जा रहा है। अच्छा चैट हटाओ क्या? वो डिस्प्ले का चैट हटा दूं क्या, मेन डिस्प्ले का? वो क्लू दे दिया तूने। ब्रो रुक अरे जा, ना। वो चैट हटा दे रहा मैं, चैट हटा दे रहा मैं। aristocratic etiquette is all just for show. ये मेरा Just जोंगली है, smile and nod along. मेरे पास आर्टिफैक्ट नहीं Osmanthus है। wine tastes the same as I remember. पता नहीं। मैंने इसको डिफेंस But बिल्ड where are किया, those who share the memory? डिफेंस और जाना चाहिए था। एचपी बिल्ड किया, माफ करो। हाँ मेरा एचपी बिल्ड है, लेकिन वो एचपी इतना भी Knights नहीं and है। मेरे को aristocrats share आर्टिफैक्ट से the नहीं मिल same रहा ब्रो, cultural क्या ही करे। heritage. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. 4 स्टार मिले इतना गया भाई। ये मेरा एचपी है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा एस्ट्रो एचपी का है। पिंग, एस्ट्रो का पिंग गंदा आ रहा है। Aristocratic भी मेरा etiquette is HP all है। just for फिर भी show. मार रहा है लौंडा। Just smile and damage nod bonus. along. I was forced to HP. learn all of the rules हाँ by भाई heart, कर लो तुम। but even I don't take them that seriously. नहीं चलेगा यस। बिना जोंगली के एचपी बिल्ड है भाई। क्या करूं? अब भी के बैनर में मेरे को जोंगली मिला है। अब भी जो लास्ट बैनर था ना, तब मिला है जोंगली। टोलेंट्स में ये 9799 है। 78 पिंग रे, क्या बोलता है ये आस्त्रा 82। मेरा भी पिंग उतना नहीं लगा। गॉबलेट पे एचपी दे दो, गॉबलेट पे एचपी दे दूं?
गॉबलेट कौन सा है बे? रिवाइव चाहिए? बताओ बताओ बताओ। एचपी दे तू बोल रहा तू? You want to learn some Favonius blade work? ऊपर है, All right ऊपर है, then, रेना ऊपर I'll है। teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. अगर टैंक बना रहे हो तो हाँ टैंक ही बनाना है भाई मेरे को। लमा। ब्रो टैंक ही बनाना है मेरे को। Aristocratic etiquette is all just for show. Just टैंक ही smile बिल्ड and करना nod है। along. ठीक है भाई तू बोला ना। I was गॉबलेट forced to का learn गॉबलेट all दे of the रहा भाई, rules इसको by भी heart, जा। but even I don't take them that seriously. गॉबलेट दे रहा भाई। बैनेट का ये स्विच कर रहा। इसको एनहांस करो क्या? कुछ है क्या एनहांस करने के लिए? ये थोड़े बार 4 स्टार है। खत्म 4 स्टार भाई। ओके चल 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 चल। रेना जा। I got you. अच्छू अगच्चू। ये देख तेरी माँ की चूत। ये देख नीचे देख भाई, ये है गरीबी पेन। अबे भाई। ये है गरीबी। नीचे देख मोहरा देख वो। Knights and aristocrats share the Bro. same cultural heritage. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous details. You want to learn some Favonius blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my मोहरा words. देख भाई, तू मोहरा देख। क्या बोलूं मैं अभी, और कुछ नहीं बोल सकता भाई। पूरा जंगली एचपी बिल्ड है। 43 हो गया। नोएल तो जाने दे। उसकी माँ की नरूटो है ब्रदर। कैसे Aristocratic हो? etiquette is all just for show. नहीं, Just smile and nod along. उजुमा की नरूटो। I was forced to learn all of the rules Knights by and heart. aristocrats Share Beg the for same cultural mercy. heritage. आईडी भी भी करते हो? हाँ But the आईडी knights करते had हैं। enough sense to do away with all the superfluous detail. करते ना आईडी भी। भाई सॉन्ग्स है यार ब्रो, सॉन्ग्स है ब्रो इसके पास। पुश हो चुका है, पुश हो चुका है। प्लीज कर दो मेरा, प्लीज कर दो मेरा ये वाला देख लो। Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart. एम नहीं बैठ But रहा। even I don't take them that seriously. एम नहीं बैठ रहा। एम नहीं बैठ रहा। एम नहीं बैठ रहा। देख रहा नरूटो, देख रहा नरूटो। थैंक यू पेन अगेन अकाउंट देने के लिए अपना। ठीक है 9K मोहरा। भाई मोहरा बहुत कम है। भाई एस्त्रा इतना बकबक करती है भाई। उजुमा के नरूटो रुक जा 2 मिनट रुक जा, मैं कर रहा तेरा अकाउंट ही रिव्यू कर रहा भाई।
Shudder! 767 गरम करायच्या आधी आणि गरम करायच्या नंतर Nice one. त्याने काय होतं माहितीये का, तू डाळ वाचवायला जाते पण उरलेला भात You खराब want to learn some Favonius blade work? Sure. भात All खराब right होतो then, ते डाळ I'll खराब teach झाली. you. Oh Sure. yes, I'll teach you all right. Mark my words. 59 आ रहा यार पोहे का बघा, चिवडा खातो तो. 59 में भाई फाइनली गॉन यू आई हैव गॉन यू लिखा ना. फाइनली हैव क्या लिखा है इसने? फाइनली हैव गॉन यू. भाई गॉन यू तो यहाँ पे क्यों नहीं है डिस्प्ले पे? गॉन यू बिल्ड नहीं है क्या नारुतो? शॉ 140 240 अच्छा है. ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं. ग्रेट ग्रेट. एम 4 से टाइम वाह. डैमेज कितना देती है ये? शोगन डैमेज कितना देती? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ ब्रो. ये क्या आर्टिफैक्ट है ये? चलो एक बार ठीक है, ये ठीक है लग रहा है. मैक्स डैमेज क्या मेरे को बताना जरा शोगन की तरह. मेरे पास बताओ 110 क्या चाहिए. शने शने 80 के बिल्ड किया भाई. हाँ दिख रहा है वो आर्टिफैक्ट नहीं है. अस्त्रा गिव मी. अस्त्रा बाय मी. 106 32 यार 190 शने 80 के बिल्ड किया. देखने नहीं देना मेरे को यार. अच्छा स्पॉट भाई, अच्छा पोला. शिमिना और ग्लैड दो सेट भाई. देखना भाई फ्री टू प्ले अकाउंट है ना तेरा ये नारुतो? प्लांट कर 65 के. Aristocratic etiquette is Okay, all okay. just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules समझ by रहा मैं heart, समझ रहा but समझ even रहा I मैं. don't take रिएक्शन them में that दी थी वो. seriously. रिएक्शन में दे रही है वो, समझ रहा मैं. फ्री टू प्ले अकाउंट है ना ये तेरा? 17 seconds. क्या तूने खर्चा किया है कुछ? भाई तेरे आर्टिफैक्ट से तो लग रहा है भाई फ्री टू प्ले. Nice one. तो अल्लाह दे दिया हिल चलो. 8 6 अरे कूलडाउन था. वैल्किन लिया है तूने हर बार. ठीक है ए चलो. इवला अस्त्रा. 236 29. इवला कितना डैमेज देती है आर्ट पे? You 117 want to फिजिकल learn some है. I know, Favonius blade work? 117 एनर्जी है. All right then, I'll teach you. Too R1 much Oh energy. yes, Too I'll much teach energy. you all Good. right. पेल फ्लेम. Mark my words. इवला का आर्टिफैक्ट अच्छा है भाई. चेंबर उधर खड़ा हो. चेंबर. इवला का आर्टिफैक्ट अच्छा है. क्रिट डैमेज तेरे को Stand भर out there, भर के stand out मिला है. इवला का बताइए तो जरा डैमेज कितना है? तो इवला बिल्ड कर दे भाई प्लीज. इवला बिल्ड कर दे भाई. Aristocratic etiquette is all just for silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. इवला से खेलता नहीं मैं भाई इतना. अबे भाई मारो ना. मारो. अच्छा इवला से नहीं खेलता क्या? ठीक है अस्त्रा होता कोई है. दिक्कत नहीं. Okay, lagging. Leave. You're lagging, 226 leave. 72 Pyro 46 Toodle. death match उधर crit rate
Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. होता होगा डैमेज 167 के शायद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, होता होगा डैमेज। Oh, A again, A again, A again. चलो चलो चलो. A again. Astra A. भाई ये क्या करो आर्टिफैक्ट देख के रखे हैं। करो करो. दोनों जाओ. मैं और चेंबर इधर जा रहे हैं. एस्ट्रा आ रहा है मेरे साथ. चलो. नो 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 नो, ए लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. दिस टाइम लेट्स गो ब्रो. मारना मत, ठीक है ना? क्रिम्सन वाला सेट नहीं लगाया इसको तू? शॉ क्रिम्सन वाला सेट नहीं लगाया क्या इसको तू? 888 मैं क्रिम्सन वाला सेट एक्सपेक्ट कर रहा था। अबे नहीं. अच्छी भाई, क्या वॉल किया मैंने. उधर ही है. बंदा था उधर. आई एम द राजा। जीन बिल्ड क्या होता भाई? जीन मेरे पास नहीं है, जीन मेरे पास नहीं है। 88 का You ईयर want दिख to रहा learn है some भाई, Favonius एनिमो blade work? 61 दिख रहा है। All right then, I'll teach you. Oh yes, Favonius I'll sword teach you दिख all रही है भाई। right. Mark my words. बताओ मैक्स 132 पर के गई तेज है, नहीं खेलूंगा. वो मेल्ट पे गई है या क्या? रेडन को 2 शॉट में 10? रुक जाओ एक मिनट, डिस्कॉर्ड का साउंड कम करना दो. Aristocratic etiquette is all just for show. I'm dead. Just smile and nod Nigga. along. I was forced to Just learn all build of the कर दिया, rules okay, by okay, heart, कोई but even कोई I don't take them that seriously. इसका क्या बिल्ड है? मेरे को इसका सेट नहीं पता क्या है, मेरे पास है नहीं ये कैरेक्टर। फिर भी आर्ट It's okay bro, it's परफेक्टली बैलेंस आर्टिफैक्ट है ये, भैंचो परफेक्टली क्या बैलेंस्ड। करेगा? ओ नाइस आर्टिफैक्ट है यार, जीन का आर्टिफैक्ट मस्त लगे बे। जस्ट बिल्ड कर दिया, आर्टिफैक्ट्स मिल जाए तो। अबे तो You want to टैलेंट के learn लिए some अपग्रेड करवा। Favonius blade work? हेलो. All right then. क्ली I'll go. डीपीएस है भाई। Dodoko, where are you? I'm holding. क्ली मेरे को चाहिए भाई यार। 1931 28 पायरो। क्ली भी बिल्ड नहीं किया क्या? क्ली भी डीपीएस है भाई। तीन है. इधर बंदे तीन है. ब्रो अबे Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. तो अभी आर्कॉन क्वेस्ट अगर कंप्लीट किया रहेगा ना तो अभी तो इस पे ध्यान दे भाई, आर्टिफैक्ट्स पे ध्यान दे। अभी मुझे रेडन C2 चाहिए। C2 क्यों करना है अभी रेडन? मैं नहीं खेल रहा यार सेज भाई. क्यों? क्या प्रॉब्लम है बता। एनर्जी रिचार्ज, इसको कैच Knights and देना, aristocrats share the same cultural heritage, इसके लिए कैच जमा। बेटर but है। the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. बट आर्टिफैक्ट चेंज कर दिया। अच्छा किया था आर्टिफैक्ट चेंज, ठीक है भाई। हाँ छे डोन. 4 सेट टेनेसिटी के ना, इसका आर्टिफैक्ट कहाँ पे है? आधा अधूरा आर्टिफैक्ट रखा है भाई बंदे ने भाई। HP इधर का भी HP किधर है? You want to learn some Favonius 50 blade के हो work? जाएगा रे। All right then, I'll teach you. Oh Aswan. yes, ठीक है भाई। I'll teach you all right. Mark Bunty. my words. एनिमो 118। जंगलिंग को दिया है कैच।
अच्छा जंगलिंग को दिया है क्या कैच? कैच इसको दे दे ना, इसका जंगलिंग को दे दे। इधर गिटार बजा रहा है भाई। Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. फ्लावर अच्छा है उसका, बंटी का फ्लावर अच्छा है। बंटी का फ्लावर? हाँ व्हाट डू यू मीन बंटी का फ्लावर? बंटी बंटी कैरेक्टर है, एनिमो कैरेक्टर है बंटी। ये भी अच्छा है, क्या नाम है इसका? सर्कलेट। बंटी का सर्कलेट भी अच्छा है ब्रो, बंटी का सर्कलेट भी अच्छा है। Knights and aristocrats share the same Amd cultural Ryzen. heritage, तेरे अकाउंट में ना तेरे को but बस the इतना knights had करना enough है, sense to do away with all the हाँ, क्या? superfluous detail. आर्टिफैक्ट ग्राइंड करना है और कैरेक्टर ग्राइंड करना है भाई। 80 81 81 80 ये जो 5 स्टार्स है ना उनको ग्राइंड कर भाई, थोड़ा आराम से हो जाएगा तेरा अकाउंट भाई। मतलब जो कैरेक्टर से तो अरे एक्सपेक्ट भी नहीं करना है ना चलो कि राम 100K चलो देंगे, चलो। वो भी तेरे को 100K के ऊपर डैमेज दे देंगे। तेरे पास आर्टिफैक्ट नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर अकाउंट फॉर एन रिव्यू। शॉ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach कर you. दूंगा, Oh yes, ठीक है I'll कर दे teach you कर all दे right. भाई, Mark my कर दे, words. अच्छा रहेगा। सबके अकाउंट रिव्यू हो गए भाई आज। आज तो जिंदगी मौत हो गई। आज कितने अकाउंट आए हुए रिव्यू के लिए? बहुत अकाउंट आए रिव्यू के लिए। अभी इतना नहीं खेल रहा हूँ तो अभी अभी लौटा हूँ गेम में। कोई दिक्कत नहीं, नहीं मेरा बस ये था, सजेशन था रे वो तेरे लिए कि भाई तू ये कर सकता है, ठीक है। कि भाई तेरे को क्या करने की ज़रूरत है तेरे अकाउंट में। अभी तेरे पास कैरेक्टर है, हर एक सिंगल कैरेक्टर ले, उसको पूरा 90 बिल्ड कर, उसके टैलेंट 10 कर और उसके आर्टिफैक्ट ऐड कर। सब एक साथ मत करने जा, फिर होगा नहीं, ठीक है। शॉप Yep. Time to scout. मैं ही क्यों मरता हूँ भाई? हेलो, क्योंकि तू ही आगे जा रहा। वही बे, मैं ही आगे जा रहा हूँ। सेज मेरे को मतलब जमता नहीं भाई, जेड दे दो। ब्रो मैं प्लंज करने वाला था। Stabilize. No, my sword! Witness the power of Gugwa! Crush! Beg for mercy! ना तो मेरा जिंचू बिल्ड है, ना ही मेरी शुक्रोज बिल्ड है। गान्यू भी नाइदा C2 है, गान्यू भी, मिया भी, काजुआ भी, ये सब है तेरे पास।
भाई गानी बिल्ड पे देख, सिंपल है। तेरे को देना है ज़्यादा फोकस क्रिट डैमेज पे। क्रिट रेट तेरा 40% रहेगा तो भी चलेगा। क्रिट डैमेज पे फोकस देना, और उसका नॉर्मल अटैक है ना जल्दी जल्दी ये कर, अपग्रेड कर टैलेंट में। भाई 3 और राउंड भाई, फिर हो गया। गाने मैं के क्या लिए तुम भाई, मैं आगे नहीं जा रहा, मैं आगे नहीं जा रहा, मैं ड्यूलिस्ट नहीं हूँ आगे जाने के लिए। सही बोल रहा। मैं आगे नहीं जा रहा भाई, कान मारा अपने। निको का आगे जा रहा हूँ, काजुआ, नहीं मर रहा हूँ पहले। काजुआ तो एलिमेंट्री मास्टरी है ना। जो ही मियाँ मेरे को पता नहीं। रिकॉइल आज अब तो दो घंटा इम्प्रेशन है ना, इम्प्रेशन है ना, हाँ इम्प्रेशन है ना। व्यूज है। ठीक है। और ये काउंट सब देखते Knights and aristocrats share the same cultural heritage, चंबा but the Dick, knights Dick, had Chimba, enough chimba, sense chimba. to do Gimme, away with all the gimme, gimme. superfluous detail. नहीं तो R1 नहीं ले सकता था कि माँ हाँ वो ऐसे था ना। साबोटाज। फेस कैम नहीं है भाई, फेस कैम होता तो भाई और भी अच्छा। What the fuck? Crush! Rack and ruin! टाइम वेस्ट करो, टाइम वेस्ट करो। तेज डिव, लेट्स गो। ठीक है भाई, ये कमीशन है। अरे कवर दोनों यार, मैं ही मर रहा हूँ अभी। हीलर का ड्यूलिस्ट हूँ, बताओ मेरे को।
Gather. More speed. उधर ही हाँ उधर ही के बाद आगे लौंडे लौंडे अरे जो ना यार कौन है कि Ad Astra. Thank you for Ad Astra Abyssal. ठीक है तुम तो ये बैक टाइम What the heck, babe? Wow, what? तीन बार खेलना ना नहीं नहीं ड्रॉ मत करो नहीं है नहीं है किधर करूँ वॉल बताओ
करूँ पता नहीं भाई आज मतलब एम ही नहीं चिपक रहा हूँ लगा रहा हूँ नहीं है ना इधर ही बैक स्टैम्प गोली नहीं देंगे भाई कर लो नाइस जीजी लेट्स गो जीजी जीते क्या Time for a light show. कौन से बाहर में नहीं खेलता हूँ कि भाई वो भी अकेला नहीं खेलता हूँ 25 आ रहा था माइनस बोल पे That didn't count. Oh, what the fuck? बोल ना ग्रूट ग्रूट क्या कर बोल क्या खेल रहा हूँ गेंशन ज्ञान क्यों है गेंशिन रुको मैं रिस्टार्ट मार कर
yourselves. Let's play. Yahoo! Wouldn't gliding be faster? Brace yourself. लंज मारने का ना. Here we go. Brace yourself. Let's play. Yahoo! कॉइन जमा करो, कॉइन जमा करो. कॉइन बॉक्स है, कॉइन बॉक्स है. Time to go. Falling leaves, adorn my night. Wind strike. Wind strike. Wind strider. Clouds high. Birds call. कैसा भी नवली ना. हाँ ठीक है. Take it easy. Really? No. Take it easy.
ठीक है ठीक है, सब लोग गांड में घुसो भाई। Take it easy. Take it easy. Bro, $60, $77. ओके, एक काम कर दे अभी। Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. King the I was Shred. forced to learn. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village. I guess all I can say now is Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you.
Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to... So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to... They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's Madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For this is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen.
All right, let's try to keep our cool. If everyone... Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. भाई क्या चूतिया लोग हैं ये लोग किनके बहका में आ गए भाई The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. Hey, say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you! Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there'll be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Raman's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. भाई गांड तो मेरे को मारनी है Your memory is far superior to mine. You still remember? By the way, do you still remember? Your memory is far superior to mine. देख रहे रे अल्ले
Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Please, wait a moment. Before attending the meeting, I hope you can promise me one. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. More speed. Everyone's here so early! But We already discussed things a bit. Hey, where have you been? Are you ready? Very well. are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk. You're making Paimon nervous. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But Candace gave us a compliment. your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your word. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, you're welcome. And good luck. मीटर जाना है. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hit them. Algorithm. Have you finished saying your goodbyes? Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and full. I hope this is clear to you. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to— Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do after all. It's like how some people can be— Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment.
That reminds, do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even, I think, those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the Sandstorms. Don't you think what is happening right now across— But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering and the sandstorm. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? In that case, it's imperative that we to make sure we're still on track. I would like to check on the state of some of our Where are we going? to an Aramite base. Whenever my pace. टेलीपोर्ट कर ले भाई. Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into her head again? What's that look on your face? Are you Paimon's a little scared, but very, very furious! That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really— I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say, because to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the
And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small project? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. जो करना है कर ले भाई तेरे को कोई नहीं रुक रहा Visibility is excellent. If we head to higher ground, we can do a... I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. I'll hit them. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. And seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon. This is also something you should know. Rahman's plan is to have me work with the Caravan Rebot guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I... Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us.
I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the... Well, now that you've put it that way. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain el Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their general? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keeper, but things like that never happened again after we met up with the Traveler.
That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. So, in my opinion, you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meeting. Will do. Just remember to stick. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. She will be working with me. The construct next to her is for her work. Beep! Construct, beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map. Hurry, bring the map! In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. We will
you want to learn some? Time for the operation. Let's go meet Sino in the desert. चल रहा है I'll bring my seasonings. उधर है sizzling Over लेना there! Our helpers have arrived already. Let's hurry over. Wait a moment. Oh, it's you. You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. ये मेरे को लड़ने मिलेंगे Oh? What a warm welcome. What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. Oh. Nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. Stabilize! This is order! Boba, get them! Stand clear. Absorption test. Animal test 6308. Solidify! Swirl, Mark 2. Shudder! Out of the frying pan, it's
beg for mercy. It's over. Killer player, hi. I want to buy an account. We have subdued them. Which account? The Oh. operation is now over. Killer, welcome to the All stream. Aramite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful dendro. I'm afraid you'll regret it first. King Jeshret will curse you, and you will all. Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Yes. Things went That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate. Go join up with her. Speaking of which, is it really okay for us not to share? I have a very close relationship with Tainari. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. चल भाई, next phase बता क्या है? तेरा भाई next phase करेगा plan का. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place down. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. I just like seeing that serious look on your face. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible. Yeah, we sure don't want him showing. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the Academia. I'd rather not have to deal with someone like that. According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's So, we'll find Tainari and convince him to... The sages have placed spies everywhere on the other side. You should be honored. I don't know. But Paimon thought mercenaries would do anything for more. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Looking good! I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to... Let's go. It's time to pay a... वह ये सब फालतू बड़बड़ करने के लिए रुकी थी क्या यहाँ पे? भोसड़ी की हट जाती। मैं मिल के आ जाता टिगनारी से। एकेडमिया का झोल है भाई। बहुत बहुत बड़ा झोल है।
Ah, Traveler, Paimon. And you are? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important. Please help us out. All right, then follow me. This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay, what is this important thing you want to ask me? The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Part East DI just a little while ago. He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Hypatia? Why would he want her? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. So you mean you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis DI. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general... Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person, your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but it's not so much that he's looking down on others, but more that he's so... I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said.
You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eye. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation... I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do any... Sorry, we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Recently, my master wrote several letters to... Hasn't he already asked you several times? Yes, but my master will occasionally leave a few dots. This has been a habit of his for many years. I get it. Since you are always at Gandharva... I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation. If the situation becomes critical, I'll leave the academia. All right, we've got a plan. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or... I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma... The academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to it. I suppose he's lucky to have lasted so long. I see. So you know... This may well be how Sino became involved in all this. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to... Thanks. Right. Now let's go... Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardistia? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. Just to be safe, let's chase him. But we have no idea what... We'll do it the mercenary way. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. It's just as I thought. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which Port Ormos? They're going to leave by... That's right. Let's go to the port and have a... हाँ ये 800 मीटर है वो क्या चल के जाऊँ मैं पागल है
hacking skills, see? Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can... Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Uh-oh. He saw us. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago, but... So this was a trap. Wait, don't tell me that... Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to party... Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen... Oh no! Let's go! Pardis DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardis DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you... Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardis DI now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardis DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. No. Tighnari, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Flood of frost! There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming! Yes, Tighnari! Beat him up! The doctor's orders are absolute! Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now! Let's end this quickly! Adsorption
Fusion test. Stay right there. This isn't safe. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. Got it. Hypatia's still here. Doesn't look like... Well, how is she? Oh, that's good. So, you think this is over? अरे भाई What? The Balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. I didn't need to do anything. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. इसको तो मैं मारेगा भाई. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle? Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Yes. Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. What do you mean? Those words almost make you sound like a friend who actually... But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories, and indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with... I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking, and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory.
You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower. How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Paimon hears thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure chatted with you for a while. Where is the storm? That means anyone outside is in danger! ये किधर है? More speed. Oh, have the Fatui retreated? Hey, what happened to you? He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen Eremites get struck by lightning before. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. My wound aside, you look... Hey, didn't I tell you... Just in case... अबे हप्सिया क्या ही हो हप्सिया तो नाम क्या उसका हपेशिया More speed. Thank goodness she's... Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always... Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. So that's what you were talking to the Balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and I must be the least ambitious person who's ever set foot in party. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some maybe the Fatui want to cover up some secret of the Balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? You said the Balladeer claims that Hypatia has seen his past. So, what could be there?
Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him with lightning? Based on what the traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed this stage of the plan. The doctor is out of the picture now. Yay! That's a big accomplishment! I'm also happy for you. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Guys, no. Yeah. Guys, noob. All right. Yeah. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. Wait until 19. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. What? I was forced to learn all of the rules. कौन से क्वेस्ट में बिजी हैं? By heart, but even I don't take them that seriously. ये अच्छा है भाई, ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा है, मालूम क्या ये लोग यार आर्कॉन क्वेस्ट कोई कर रहा है ना? और स्टोरी क्वेस्ट कोई कर रहा नहीं है, तो उनको भटकाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। नीलो Nilu, it's nice to see you again. Oh, hey there, Traveler in Paimon. Are you here for some shopping too? That's right. Although there were a few hiccups here and there, the Sub-Zerus Festival turned out to be a grand success. And so, the theater wants to host a celebration event. Do you two want to come? It'll be a really fun time. It's something like a tradition of ours. Whenever we wrap an important performance,
we'll get together and unwind. Rehearsals are exhausting. If you keep your nose to the grindstone, you're going to wipe yourself out sooner or later. Mr. Zubair, our manager, always says that celebrations aren't just for fun, but that they should also be occasions for reflection and review. But no one remembers that once the celebration starts. It's not like he can't also have some fun himself. We've been to a lot of festivals during our adventures. Will your celebration also have lots of yummy food and drinks? Of course. We always do lots of eating, toasting, and gift exchanging. We try really hard to show our appreciation for everyone. Ah, so we'll need to bring a present. Hey! Paimon's gonna put you in a box first! It's fine. No need to stress, Paimon. You can come, present or not. You two being there would be the best gift of all. It'll also be a good time to introduce you to the rest of the theater. Is something up? Yeah, but for now, it's more important for her to rest and recover. I tried to visit her, but I got turned away at the door. The people there wouldn't listen to a single. All I could do was to leave a letter encouraging her to get some rest and keep her. She'll be better soon. And then we can celebrate together at the theater. It's all thanks to you and Nilu that we managed to save Dunyarzad. You're way too modest. Just now, I actually, compared to you, I really didn't do much at all. Anyway, all that aside, are you thinking about coming to our event? Paimon thinks it'll be a great time! What do you think, Traveler? Alright, then let's head to the theater. Wait, I completely forgot about this pile of stuff! Whoa, did you buy all of this, Nilu? Just one box. The rest were given to me. I really don't know how it came to this much. That's way too many freebies! Many vendors give out samples for free, but Paimon's never seen this much. All I know is that whenever I start chatting with people, my hands would get more and more full until I can't hold everything anymore. This seems to happen every time. I was planning on making a few trips to bring everything back before continuing on with my shopping, but I don't think I'll have the time. So this isn't even all of it? Are you sure? Of course! Carrying stuff is a piece of cake for her, right, Traveler? I'm Well, let's hurry up and grab... Oh, well if it isn't Nilu. Greetings, Mr. Jute. Do you still have any food that's ready to go? Of course I do. I've heard that Zubair Theater is hosting a celebration event, so I've reserved some food for you in advance. Although, it looks like you're gonna need 2 more portions. Please allow me to introduce them. This is the Traveler, a very experienced adventurer. And this is Paimon, her super reliable guide and helper. No, Paimon is... hold on. She got it completely right. Look, Traveler, she Don't underestimate Nilu. She always remembers every last little detail about everyone, even if it sounds completely trivial. She's also very brave. Just a little while ago, she saved my precious spices from the jaws of a sumpter beast. Don't think anything of it. I just help out when I can because everyone else takes such good care of me. Anyway, sorry to get off topic. We're in a bit of a hurry. Mr. Jute, did you say you didn't reserve enough food? I was joking.
Anyone who runs a business knows to keep some extra stock. After all, orders get changed all the time. Oh, that reminds me. It seems that these friends of yours aren't from here. Have they ever... Ooh, what a fantastic idea! Tagine is a mixture of rice and meat that's baked. Its aroma is just so wonderfully... But is it We're 2 peas in a pod! Who doesn't... Wait here. I'll bring some over. Whoa, what a dish! It's sweet and sour and full of deliciousness! Paimon can't eat it fast enough! No matter how many times I eat it, it's still so delicious. I wouldn't have offered it as a treat if I wasn't confident in the taste. I baked a lot just now, and it's all packaged and ready for you to take. You made so much. Is it really okay to take them all? It was nothing. Making one serving or one... Don't worry about it. Make sure you got everything. Feel free to come back anytime. I'm starting to understand how you got so many things. Yeah. Everyone... Nilou, good time. If you took any longer, the Sumpter beasts might have got... You and your jokes. Sumpter beasts won't eat those kinds of things, Mr. Offsheen. Jude said that some Sumpter beasts ate his spices. Were they yours? Oh, yeah, really sorry about that. Nilou, if it weren't for you, I would have lost half of my profits that month. Trying to pull anything out of a Sumpter beast's mouth is like playing a game of tug-of-war. So they really do eat anything, huh? What's that supposed to mean? Come now. You know, Sumpter beasts sometimes eat not because they're hungry, but because they like gnawing on things. The textiles you ordered are highly durable and woven from the finest thread. So even if a Sumpter beast got snacky, it'd still have to chomp on it for a full... You've tested this before? But of course! How else could I be so trustworthy? Well, that one time was an accident. I wouldn't dare experiment with such a precious product. True, it does sound like some good fabric. Ho ho! Have I piqued your interest? If you want to buy some, now's a good time. Buy 2... Ooh, that's a pretty good discount. What do you think, Traveler? No thanks, Mr. Offsheen. You can't use that kind of tactic on her. Look, you've already sucked her in. Tactic? So you mean everything he just said to Paimon was a I wouldn't go that far. It's just that Mr. Offsheen is really good at spinning stories. A word from him, and you'll find yourself buying things you don't actually need. Mr. Zubair gave me a huge lecture the last time I bought too many things. Come on, don't look at me like that. All she got was a talking to from Zubair, while I was nearly fed head first to the Sumpter beasts. My philosophy is that stories give value to merchandise. That's why my business started with such a boom. Our Nilou here is an extraordinarily good list. After a while, I began... Anyway, since then, I've come to realize... It's okay. That reminds me. Some of the goods from my latest shipment aren't... They're fine for general use. Nilou, why don't you take them? Huh? No, I can't do that. Just think of it as a favor for me, all right? It costs me mora to store or ship, so I'm just losing money every day continuing to hold on to them. Even so, let me buy them at market value. Nah, these goods are hard movers. Besides, if I just take them... If you really feel that bad about it, give me some theater tickets. Oh, yeah, you should also take some while you're at it. Adventure... Wow, even we get a share of this? Hurry and take it. Just looking at it all is giving me a headache. Thanks for the huge favor. There's still one more store. Are you alright holding on to that much stuff? Paimon? About time, Nilou. Farhad here was snooping around your props. Please, I was only looking at them to get a better idea of what your new show may be about. Wouldn't spoiling yourself just ruin all the fun? Yeah, please wait for our official performance. These two look familiar. I think I've seen them before. Weren't they at the Sub-Zerus Fest? Yeah, and they're coming to today's celebration. Oh,
the more folks the merrier. I was actually just talking to Farhad about also stopping by tonight. Oh, yes, please do. I'm sure Miss Raykar and Miss Nadja would also love to have a chat with the two of you. We even prepared a small gift. Let me show it to you. Ta-da! I really think we should wear some of these to give the event a more celebratory feel. Wow, it's beautiful. Farhad did most of the work. What a surprise, huh? He actually knows a lot about crafts. That is pretty surprising. Hey, why can't I have a little side hobby? I worked really hard on that. I know. I watched you make it. All right. Why don't you also try some on? It fits perfectly. They're so pretty! Is there one that Paimon can wear? Unfortunately, we already gave out all the child-sized ones. I wasn't expecting the theater to invite such a fascinating... Fascinating? Huh. That sounds kind of weird, but Paimon will let it slide. Oh, you all sure got a lot of stuff there. Let me help you carry some. I'm a porter by trade, so this is what I'm best at. That'd be great! Please and thank you. But we have a pro now! Thanks for the help, Mr. Farhad. But let me make otherwise. I mean... Shut it. Fine. It's not like I want to get, including Hushan's things, though, with each need... Paimon looks like she doesn't want to, so I'll carry a little extra. Although I may not appear super strong at first glance, I actually do a lot of strength training on the regular. Strength and balance are both really important for a dancer. No, let Paimon. Paimon will help carry things. The Traveler's right. Paimon shouldn't freeload. Paimon can't fly anymore. Are you okay, Paimon? Paimon's good to keep going. But... Oh, that sure was a lot of stuff. Oh, looking forward to the event later. Thank you, Mr. Farhad. Thank you, Sumpter Man. Whew. Paimon's definitely going to eat it all back later. All right, I'll leave you all to it. See ya. Good thing we had Mr. Farhad with us, or else that, of course. Because we're all like neighbors. So with this many freebies being thrown at you, you probably don't need to work. I felt so guilty at first, like I always owed someone something. Later on, I realized that it's actually like what Mr. Afshin said. When you order the wrong item, or make too much of something, sometimes the best way to maximize the value of those goods is to give them away. That's why there's no need to stress over the freebies. All of us— Oh, that actually makes a lot of— This has become our norm, and no one keeps track of— So really, don't worry about it. Alright, I have to bring all this to Mr. Zubair and do a little bit of prep. Feel free to hang out here for a bit. Maybe— Nope. Mr. You two are our guests. So please, just relax and look forward to the celebration. Wow, the atmosphere here is so Bro, nice. इतना घटा मजबूरी करा है और अब भी बोल रही कि ourselves in this warmth. अब बोल रही कि भाई ये करो क्या? घरा मजबूरी मत करो. More speed. More speed. ऊपर है क्या ये? ओह, अंदर है.
खिलाड़ी This new Trust me. shipping device Just take my is word so for it. ridiculously overdesigned. bro. कमाल It's called being a famous. It's an easy job, isn't it? मैं अगरबत्ती आड़ में लाऊं अरे बहनचोद तो कमीशन दे रही है वो क्या दिया इसने More speed. This new shipment of items, they're also ridiculously overdesigned. Interested in joining the Light Novel Society? Illegal trade is strictly prohibited here. Why does he have to tell this? फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जाते हैं मम्मी एवढे अगरबत्त्या एक इकडे ते तीच ते इकडे एकच लावते ना इकडे एकच पडेल आता पटकन पडला अंगावर तो
Squirrel, Mark 2. Solidify. This is order. Eye for an eye. Gather. At the frying pan, into the fire. Animal test 6308. Vengeance will be mine. Shudder. More speed. Condense. अच्छा आर्टिफैक्ट है भाई, अच्छे लवली आर्टिफैक्ट चाहिए अपने। ये क्या है? Stabilize. Bubba, get them! Yeah, absorption test. Stand clear. Order guide. Crush. At the frying pan, into the fire. Absorption test. Beg for mercy. Crush. Solidify. Stand clear. Enhanced animal module 75. Beg for mercy. हाँ? क्या हाल है? अरे यार ये क्या दे रहा है यार? HP जंगली पीस भाई बहुत ही बकवास दे रहा है, ठीक है, बहुत ही बकवास ब्रो। Stabilize. Nice and spicy. Animal test 6308. Stand clear. Flood of frost. Shudder. Solidify. Out of the frying pan, into the fire. Absorption test. सुक्रोज ने मार दिया बस, सुक्रोज ने मार दिया।
जंगली पीस दे रहा है ये तो भर भर के एचपी I will have order. Nice and spicy. You're toast. Animal test 6308. Stand clear. Beg for mercy. Swirl, Mark 2. Gather. गलत हो गया अभी Shudder. Booba, get them. Solidify. Crush. Order guide. Nice and spicy. Animal test 6308. Beg for mercy. Stabilize. stabilize Hmm? 80k damage. ऊपर ठीक है ह्या महिन्यात नाही ना चालू झाली बघा तुला ठेवणार नाही मी बोलून You'll get it fast time. Time to work. This is order. Out of the frying pan, into the fire. Hey, absorption test. Animal test 6308. Enhanced animal module 75. My duty. Oh no. Booba, get them. Crush. Freeze to the core. Flash raw cooked food. Disgusting. वेट अभी एक काम करेंगे इधर जाते हैं भाई टेलीपोर्ट I await your instruction. What exactly is teamwork?
embodied! Cryo incarnate! Beg for mercy! Solidify! Take flight! Gather! My apologies! Kamisato art! Sometsu! Take your true form! Rack and ruin! More speed. Stabilize! Take flight! Crush! My will embodied! Ah, 80k, 80k, 8. Great rate, heavy. Aristocratic etiquette is all just for show. Just... I want to help. I guess the housework can wait. Check this out. Don't get too close. Shield है क्या ये भी? Defense build है क्या? Thoma? HP build है Thoma. इसका क्यों जनरेट करके देखते भाई. Fire it up! Don't get too close. Absorption test. Gather! Stand clear. Absorption test. Check this out. Solidify!
Animal hypostasis emulation. Fire it up! Hey, what was that for? Gather! होमा बकवास है भाई पायरो के नाम पे कोई है क्या आ रहा है यहाँ पे Ready for trial. Stabilize! Motion to compel. Stand clear. Ha! Duh. Shia! Absorption test. Solidify! Incinerate! बॉल कर रहा लेकिन पायरो नहीं दे रहे उसमें Animal test 6308. Ta! Ka! Ha! Absorption test. Stabilize! Boom boom! Animal test 6308. ध्यान पर भी नहीं नंबर दे सकती है At the ready. Gather! Get him! Stand clear. Animal test 6308. Stabilize! Let it rain. Get him! लास्ट कर रहा है वो भाई ये चापी सकता नंबर भी फालतू है भाई I can't wait any longer.
कितना बचा अपने पास? कंडेंस है नहीं. What was that? Oh, it's gone. Can I go take a look? पायरो डैमेज बोनस देगी रे ये. सेट अच्छा है ये, एलिमेंट्री और एचपी डिफेंस. एनर्जी रिचार्ज. बोनट को दिया ऑलरेडी. शिमिना 17 का ईयर है. ये ठीक है, ये ठीक है. मैं एनर्जी रिचार्ज चाहिए भाई. ये ठीक है. और पीस लो ना पे. नहीं, ये स्टार्ट से. अबे ये पीस ग्लैड भी नहीं लगेगा. पाणी भेटेल का ग मला मम्मी? तुला दिलं बरं बाई. एक गल्लास पण. आता मोठं दिलं असं काही मिळणारच नाही. चहा पी त्याच्यावर बरं पडेल खूप गरम करून. दोनों में सेम पीस है. क्रिम्सन स्विच. ब्रो थोमा के पास क्या है? मास्टरी. एनहांस करोगे इसको? जिसमें नहीं जाना चाहिए तो उसमें गया है. एचपी. ओ हट. ये दोनों अच्छे हैं. ये खेल के देखते हैं. खायो भर भर के. चल ले ले. मेरे को लगता है झांगलिंग को नहीं लाने चाहिए था यहाँ पे. क्यों ऐसा? Absorption test. I condemn you. Yeah. Sir. Crush. Solidified.
Order guide you. Vengeance will be mine. Shudder. Animal test 6308. Beg for mercy. Eye for an eye. Gather. Absorption test. Swirl, Mark 2. Shudder. नहीं टूटेगा ये ऐसे हाइड्रो कैरेक्टर चाहिए भाई हाइड्रो कैरेक्टर लेना चाहिए भाई को पता नहीं अंदर पूरा पायरो है Ayaka लेते Kamisato Ayaka, present. Kamisato Ayaka. May knowledge guide you. Stabilize. My apologies. No, my sword. Take flight. Gather. I will have order. Let me read you a verse. Embrace the ice. Rain outlines your fate. Whirling snow. Solidify. Rack and ruin. More speed. Time to act. No, my sword. My apologies. Body and witness the power of Gua. Stabilize. Order guide you. Take flight. Sakura swirl. Quake. I condemn you. No, my sword. Whirling snow. Rain outlines your fate. My apologies. Embrace the ice. तो ये क्या था भाई
ये फालतू पीछे रहा भाई More speed. Gather! Aye. My apologies. Gather! No, my sword. Sakura swirl. This is order. Rain outlines your fate. No, my sword. Whirling snow. Kamisato art. Sumetsu. Beg for mercy. Take flight. Solidified. I will have order. तो इतना क्या मारते हो डिफेंस है ठीक है अभी क्या ही करे भाई nothing you can do Gather! No, my sword. My apologies. Take flight. Stabilize. My apologies. Gather. This is order. Rain outlines your fate. Sakura swirl. Rack and ruin. Freeze to the core.
Let me read you a verse. My apologies. Take flight. Kamisato art. Sumetsu. Rain outlines your fate. तो बहुत मार कर भी पैसा भी उसके चक्कर में अपने बर्बाद हुई। अरे कितने हैं अंडरआर्च 2 पे भाई? अच्छा 3 है भाई, उसमें से एक गया तो भी चलेगा। इस पे लगा था, वो कहाँ गया? ये था ना भाई, इसको ही अपडेट करेंगे भाई इससे। रेट और एनर्जी रिचार्ज वो पाया। एलिमेंटर मास्टरी ठीक है भाई। भर के एलिमेंटर मास्टरी रो। इनफासिशन मोरा ठीक है भाई।
तो बनियो अपनी। किधर है ग्लूकोज? My experiment will succeed. Just sharpen my spear. Race you. ले जाने के लिए टेस्ट करना। नीचे ओशन आइड है। टीपी लेके इधर जा सकते हैं भाई, उसी जगह घूम के पानी में फेंक के लहसुन करके जाने की ज़रूरत ही नहीं। कोहरा ही कोहरा। Nice and spicy. Stand clear. वो 80 के देता है ना रे? क्या देता है वो? महारानी वोलांटे। Crit hits have a 60% chance to generate small amount of elemental particles, which will regenerate 6 energy particles for the character. Only occur once in 12 seconds. Damage. When the character takes the field, they will gain the random theme song for 10 seconds. This can only occur every 30 seconds. Increase by 60%. Increase all elemental damage by 48%. Widsmith 3 है। हाँ? Let me test. टेस्ट किसके पे कर रहे हैं भाई? टेस्ट किस पे करे?
Solidify! Out of the frying pan, it's... Absorption test. Stand clear. Animal hypostasis emulation. Stabilize! Boba, get them! Absorption test. Stand clear. मोरा ही नहीं है अपने पास। बड़े 7000 HP है उसका। और 80 कितना हो गया? 22।
Where do you want to go next? Reach करने के बाद ये करने में करना है bonus ठीक है भाई ये भी अच्छा पीस है If you'd like to see Liyue's tourists. नहीं देखना पड़ेगा जो मैंने उसका चेंज किया किधर गई शिमिनावा तक मेरा कितना सेट था फुल सेट शिमिनावा था ना शिमिनावा चेंज हुआ था अभी 80 के कम ठीक है यहाँ पे फिर वो ये पेल फ्लेम हटाना पड़ेगा काफी पेल फ्लेम तो करार डैमेज और भर भर के हिट है नीला पीस है वो नीला पे क्या है glad
Now let me see. Yeah. 7045. I have a few references. Hello, can you review my? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ब्रो मेरे पास भी अल्बेडो नहीं है तो मेरे को तो बेसिकली पता नहीं उसका सेट क्या है अल्बेडो का अल्बेडो का सेट क्या है मेरे को भी पता नहीं ब्रो तो वंश वेलकम टू द स्ट्रीम Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Yes. यहाँ पे करते स्ट्रीम खत्म मेरे को आया 5 मिनट में